That we have entered into the last date. Mine, my lord. I had mentioned it earlier. My lord would Only appreciate. short patterns for some interim relief if it is. My lord, but I need interim relief. My case is of interim relief. A person has been convicted, FIR lodged, cognizance taken, filed, charge sheet filed, cognizance taken, charge framed, pleads guilty, all on the same date, convicted on the basis of that and on a formatted order. उसमें नाम जो प्रीवियस कन्विक्शन का है वो गलत लिखा हुआ है, इंक्वायरी किस दिन की है वो भी गलत लिखा हुआ, सब टाइपोग्राफिकल है, एक फॉर्मेट में डाला हुआ है. सेम डे हुजूर एक्साइज एक्ट, and 375 says that if I plead guilty, which I assert that I have not and I was made to sign papers, but the CRPC says 375, if I plead guilty I cannot file an appeal. So this is the only way I'm on. My prayer is also for bail, and I've filed the. Lordship, in my case, Lordship, interim relief is very urgent, Lordship. In this case, Lordship, I have been convicted for 1 month, Lordship, 138 of 1 month. 1 month के लिए लॉर्डशिप इसमें प्रोविजनल बिल मेरा कंफर्म ना करके वो भेज दिए करके रिजेक्ट कर दिए कि ना तो आप बेल में हो ना तो आप बेल में, जबकि हमने टाइम विद इन टाइम किया है फाइल, ये भी ऑर्डर शीट हमारे विद इन टाइम है, ट्रांसफर कर दिए मैटर को बाद में कर दिया. You have been convicted for 1 month for which offence? 138 of NI Act, Lord. NI Act. And that is available. अगर 1 मंथ के लिए आपको दिया है उन्होंने. हाँ, उसमें लॉर्डशिप ये मेरे ऊपर जो ये चार्ज लगाया हुआ है कि आपने इतना रुपया का ये चेक बाउंस हुआ आपका, उस पे उसको भी वापस करने को कहा गया लॉर्डशिप, उस पे 6% इंटरेस्ट के साथ, यही हमको कन्विक्शन है. तो आपको जो सेंटेंस दिया उन्होंने 1 महीने का दिया ना, 1 मंथ का है. तो आप यहाँ पर आए हैं उसके अगेंस्ट. नहीं लॉर्डशिप, वहाँ पे हमने अपील फाइल किया, वो रिजेक्ट हुआ, उसके बाद यहाँ रिवीजन में आप आए हैं. रिवीजन में आए हैं. तो एग्जम्पशन आपको मिला हुआ है फ्रॉम सरेंडर? नहीं लॉर्डशिप, एग्जम्पशन प्रोविजनल बिल तो शुरू में मिला हुआ था, हमने उसी को कंफर्म. नहीं, अब तो प्रोविजनल बिल का सिचुएशन नहीं है ना, जब अपील खारिज हो गया. हाँ, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए लॉर्डशिप, एग्जम्पशन तो नहीं मिला हुआ. क्या पोजीशन है? योर केस मस्ट बी हैविंग सम डिफेक्ट्स. नहीं लॉर्डशिप, आज लिस्ट पर है 553 पर एडमिशन में. एडमिशन में लॉर्डशिप. यस लॉर्डशिप. इट मींस यू हैव सरेंडर्ड. लिस्ट पे नहीं लॉर्डशिप, रेगुलर लिस्ट पे 553. आप सरेंडर कर चुके हैं? नहीं लॉर्डशिप, सरेंडर नहीं. किससे एडमिशन में है? सरेंडर नहीं किया. देखिए तो अंडर आवर हाई कोर्ट रूल्स सरेंडर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड. तो लॉर्डशिप मेरा ये जो कंफर्मेशन नहीं दिखवाते हैं आपका पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए. संजीव कुमार आप स्लिप कीजिए, देखना होगा एक बार. चलो एडमिशन में प्लेस किया है विदाउट सरेंडर सर्टिफिकेट कैसे किया है देखना पड़ेगा. हाँ ठीक है, देखते हैं. May I mention, my lord, on the last occasion, your last date, your. अरे क्या इंट्रीम आपको क्या है उसमें? My lord, क्या इंट्रीम आप चाह my रहे lord, in this case, my lord, what has happened is, my lord, the district prosecution officer in charge at Muzaffarpur has been roped in a case, my lord, at my lord Begusarai. There is no involvement in the case, but my lord, he is there. He has been roped there. दीजिए. रिलीज मैटर है लॉर्ड अंडर द माइनिंग एक्ट लॉ. मैं सीरियल नंबर 338 पे जुवेनाइल का बेल पिटीशन है माय लॉर्ड. लास्ट टाइम सुना गया था केस डायरी पर 1 साल से ऊपर जेल 338 पर. अंडर विच प्रोविजन यू आर अंडर प्रोविजन क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया. नो अंडर विच सेक्शन यू हैव बीन चार्ज्ड? चार्ज वो ये हुआ था, he was found under 414/34. 414/34. NDPS Act. 1 ग्राम 5 मिलीग्राम ही मिला है उसका. क्या पोजीशन है? आज टेकअप होने वाला है? नहीं होगा. माय लॉर्ड 338 पर है. आप दे दीजिए स्लिप. इस सप्ताह में कह रहे हैं कि हो जाएगा, टेकअप करेंगे हम लोग. टेकअप जुवेनाइल का बेल हम देखते हैं, उसको लिस्ट पे ही है. I'll devote some time. रिलीज ऑफ व्हीकल अंडर द माइनिंग एक्ट लॉ. रिलीज है लॉर्डशिप माइनिंग एक्ट के तहत. रिलीज ऑफ व्हीकल. लॉर्डशिप It has been rejected from the court below. लॉर्डशिप हम रिवीजन में इसलिए आए, लॉर्डशिप का डायरेक्शन हुआ था 7/7/2022 को. इसके बावजूद भी एसएचओ नहीं छोड़ रहे हैं गाड़ी. हमने कॉन्फिस्केशन पोस्टिंग भी डीएम ने ड्रॉप कर दिया है. फाइन अमाउंट भी 33,000 रुपया. डायरेक्शन हो गया फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं. लॉर्डशिप
Our London magistrate have no power to confiscate the vehicle under the Mining Act, Lordship. Is there any order of confiscation? लॉर्डशिप मजिस्ट्रेट के द्वारा पास किया, इसके बाद फिर एडीजे ने उसको फाउंड कर दिया लॉर्डशिप। तो हमारा ऑर्डर जो है उसके बाद ये ऑर्डर हुआ है कन्फिस्केशन? नो लॉर्डशिप, हमारा डीएफडी हो गया लॉर्डशिप डिफेक्ट रूम करने में, लेकिन सब हो चुका है, इस रेस्टोरेशन के बाद हुजूर आया है और गाड़ी सड़ रही है लॉर्डशिप 1 साल से। अच्छा, तो आपका रिवीजन अभी टेकअप नहीं हुआ है ना? लॉर्डशिप इन सीरियल नंबर 208। ऑल राइट, सो आई हैव नॉट पास्ड एनी ऑर्डर। लॉर्डशिप को द्वारा आप बात थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कीजिए ना। आपने कहा कि मेरे ऑर्डर के बावजूद एसएचओ नहीं छोड़ रहा है, यही बोला ना आपने? लॉर्डशिप हमारा कोई ऑर्डर है रिलीज का? लॉर्डशिप है, डायरेक्शन दिया था देखने के लिए वहाँ डीएम को। दिस इज नॉट फेयर। यू आर ए लॉयर। ये सब थोड़ा इधर से घुमा के थोड़ा उधर से लगा करके बोलने का जरूरत नहीं। You gave me an impression कि despite order of this court, SHO has not released the vehicle. नो लॉर्डशिप काउंटर के लिए हुआ था, उसी में आदेश हुआ था। काउंटर के लिए हुआ था ना, तो आप सीधा बोलिए दीजिए। रिलीज ऑफ व्हीकल के लिए ले रहे हैं हम स्लिप्स, इतना घुमाने की जरूरत नहीं। रिलीज के लिए है, दे दीजिए रिलीज का जो भी है। May I be permitted, my lord? The petitioner is a government servant, and my lord, a case has been instituted pursuant to the direction under 156(3). My lord, the petitioner was a gazetted officer, was posted as an executive officer at Bhabua. A contractor filed a case against him, and under 328 and 307, my lord. The FSL report has come, the doctor statements has come. Nothing is against the petitioner, my lord. The FSL report categorically states that there is no poison in the lemonade which has been served, and despite that, my lord, the petitioner has been charge sheeted. He is a government servant. He has been suspended, my lord, and interim protection is required, my lord. Otherwise, the court below will. What kind of interim protection? My lord, the granted? proceeding Once may you be have been stayed, my charge lord. sheeted, you have already been charge sheeted. Recently, yes, my lord. Then During the pendency of have this. you applied writ- for anticipatory bail? Yes, my lord. Anticipatory bail has been granted to the petitioner, but my lord, my Then- career is being prejudiced, my lord. This is the difficulty. The What, court below will what did I has say at kept. the beginning? Mention only for interim relief if required. My lord, Are you looking for an interim relief? my lord, this is an urgency because my lord, the You court are below not has. required to be so. ये आप बताइए ना, आपको कोई interim relief की जरूरत है क्या? My lord, the court below has fixed the case for order taking cognizance, and it will again prejudice, my lord. The case will again No, full if the charge. order taking cognizance will be passed, My you lord. can amend the writ application and challenge the same. You may be granted relief, if any, only by way of final relief, not by way of an interim relief. My lord, any day may be fixed, my lord. He is a government. His career will be What prejudiced. can This be is done? the We are in the last week before winter vacation. any day, my lord. Friday, my lord. Wait Virtual day, for- my lord. It will wait hardly for take the 2 new- minutes, my lord. My lord, it will hardly. He's an and the Wait whole for case the is. new year. Perhaps new year may come with some good news for you. हुजूर तो न्यू ईयर में शायद आपकी किस्मत में कुछ फायदा हो, इसलिए अभी इस साल को जाने दीजिए। हुजूर इस हुजूर साल मैं को जाने दीजिए। अब एक सप्ताह में मुश्किल से 4 दिन और रह गए हैं। हुजूर Any मेरा day, है my lord. If Friday, any day, virtual day, my lord. Hujoor, Last I don't case. know. I am so Obliged. हुजूर fixed. Hujoor, I am not हुजूर will मेरा है take time for any हुजूर other matter. हुजूर इन दिस केस Wait just a minute. Wait. माय लॉर्ड बोलिए। Lordship, I have filed one IA, Lordship, for the exemption from surrender, Lordship. Because Exemption from surrender. Yes, Lordship. देखिए। Obliged, Lordship. May I It is listed. permitted to mention also. Lordship, Orders on petition मिलेंगे। Lordship, wife of the petitioner is with her boyfriend for 3 years, and petitioner is facing proceeding 304 filed by the father-in-law of the petitioner, and CCTV footage of the Dr. Santi Rai Patna 104 304B, Lordship. B. Yes, Lordship. And The wife is still alive. yes, Lordship. And it has come in CCTV footage of the Dr. Santi Rai. From here, she frisked away with her boyfriend when she was here for treatment with mother-in-law, Lordship. And what is the position? Investigation का क्या position? Lordship, in anticipatory bail, Lordship, no coercive step has been No, no. provided What by is the coordinate position of investigation? Lordship, Investigation का क्या position है? three occasion, Lordship, they are called for progress of report, but no report was. What are you looking for in this court?
क्या चाह रहे हैं Lordship, आप? only proper investigation regarding my complaint in Patrakar Nagar Thana about CCTV footage and verification of CCTV footage and investigate. Proper investigation matters Yes, are coming. कब का केस है आपका? 2022, Lordship. 22 आ जाएगा आपकी. We are up to date. Lordship, it is at कब का फाइलिंग है आपका? 3052 consolidated list. कब का फाइलिंग है? About 2 months ago, Lordship. 2 months ago. Matters are coming. देख लीजिए इनका. केस नंबर कितना? देख लीजिए, दे दीजिए, स्लिप दे दीजिए. May I permit? Yes. Lordship, earlier occasion, your Lordship heard this matter and fixed for your Lordship today and within top 10 cases, your Lordship. In spite of that, Which matter? Please tell me. criminal writ matter, your Lordship. But your case is listed serial number 85, your क्या Lordship. है? What is the matter about? Lordship, in this matter, your Lordship, similar accusation, your Lordship repeated a case informant. So, Lordship heard this There is matter. a judicial order to list within top 10 Yes, cases. your Lordship. There It is has already been listed. listed at 185 serial Lordship, not within top 10 cases, your Lordship. क्यों है? Order release. If there is a judicial order, then why? Yes, Mr. Sharma. Lordship, for the causing of the FIR, Lordship, for the same transaction, 2 FIR has been lodged, Lordship. And We'll have to wait. We'll have to wait for some time. You have got interim relief? No, Lordship, we have already filed an inspective bill, it is pending and we have not got the interim. Is there any coercive action taken? No, no, against Lordship. you? No coercive action. So you can wait for some time. If no coercive action is being taken. No, it has not given, Lordship, no coercive action against the petitioners. And petitioners are ladies, Lordship. And the May I permitted to mention, Lordship? दोनों चढ़ा दीजिएगा. वो पहले भी जो पेंशन किए थे ना, और ये दोनों लेडी का है इनका. May I, Yes. from the list, your lordship, may I permit you to? Just a minute. Wait, outside the list. Outside, Or from the consolidated list. yes, my lord, from the Not consolidated outside list, list. your lord. Outside list matters are not. Yes, my lord, I am My lord, seeking this is the permission of matter. this honorable Just a court. minute. Lordship, may I be Yes. permitted, Lordship? Lordship, may I be permitted, Lordship? Lordship, there is judicial order to list this matter on 1st of December, Lordship. This is, Lordship, regarding quashing of the affair, Lordship. I have contract with the excise department, Lordship, and Lordship, they not only the 1st of December, there was an order. Lordship, to It has been listed or not? Lordship listed, but it's down in the list, Lordship. तो ठीक है ना, आएगा. Lordship, मेंटेनिंग इट्स पोजीशन होगा. सीरियल नंबर में आपके ऊपर आपके पहले वाले केसेज होंगे. Lordship, 1 बजे वाला लिस्ट, Lordship. आप चेक कर लीजिए. इंटरिम रिलीफ आपको दे रखा है, फिर क्यों 1 बजे वाले लिस्ट में आप चाह रहे हैं? चलिए बोलिए. अगेंस्ट कन्विक्शन, लॉर्डशिप सरेंडर कर दिए हैं. कर दिए हैं. हाँ, सर्टिफिकेट दोनों फाइल कर दे दीजिए. बता दीजिए. सब जेल वाला जितने लोग हैं ना, जेल वाले जो लोग हैं, वो सबको टॉप प्रायोरिटी दीजिए. May I permit you to mention, my lord, a case minute. not from the consolidated list, बोलिए. your lordship. लॉर्डशिप इसमें 6 महीना का है और ऐसा है कि वहाँ पे हमने क्रिमिनल अपील फाइल किया हुआ है. हमारे बेल को अपील नहीं डिसमिस किया लॉर्डशिप, सिर्फ हमारे बेल को कंफर्म नहीं किया हुआ है, जबकि हमने विद इन टाइम फाइल किया हुआ है. ठीक है, दीजिए. इसीलिए आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बिकॉज आप जो है वर्चुअली बेल मांग रहे हैं. बेल मांग रहे हैं लॉर्डशिप. Lord, sir. Yes, बोलिए. Lord, my matter is at serial number 4020, my lord. My lord, in this case, my lord, I have filed, my lord, the criminal writ against the SP Kishanganj, my lord, who is implicating this petitioner. Lord, in any false case, 420, 467, my lord, SP, I have alleged malafide against the SP, my lord, who is involved in the, my lord, business transaction. And due to that, my lord, the petitioner. SP is involved in business transactions. I will demonstrate, my lord, from the pleadings. What kind of business he is doing? My lord, the land, my lord, the grabbing or. Land grabbing. My lord. And I will respond. My lord. लगाइए इसको ऊपर जरा. Land grabbing कहाँ SP साहब? My lord, the petitioner, she has attended the majority and she has been kept in after care home, my lord. For her release, she has filed, my lord. She has attained majority. My lord, Where does she want to go? with the respondent number 6, whom she wants to marry. She is married to respondent number 6. 6. That is the reason why she is being detained there, my lord, on one pretext or the other. Respondent number 6 has appeared. No, my lord, he has not appeared. Why don't you get him appeared? I will get him appeared, my lord. I will get him. Get him appeared tomorrow, then I'll fix it in chamber. My lord. I'll fix it in chamber. Yes, my lord, may fix it. I will ask him to appear. Get him appeared, but. Then I will have to mention again
आप दे दीजिए स्लिप. My lord, and then I will But inform them. it will be listed only when you will enter appearance after My lord, of course, my lord. informing the bench officer. My lord, I will inform. All right. हुजूर मेरा है चार्जशीट चेंबर अगर ये बता देंगे ना, चेंबर में लगा दीजिएगा थर्सडे को. हुजूर चार्जशीट कॉग्निजेंस के क्रॉसिंग के लिए हुजूर फाइल किए हुए हैं. 30/8 से मेरा बेल पेंडिंग है और डीए केस में विदाउट हम तो हुजूर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, सिर्फ डीए केस से गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे हुआ और हमारे मित्र हैं चूंकि क्या चाह रहे हैं आप सब बताइए. जी हुजूर क्या चाह रहे हैं? हुजूर नो कोर्सिव अगर नहीं किया जाएगा तो हम पर बराबर थ्रेट कर रहे हैं. पहले जी हुजूर एंटीसिपेटरी बिल में एंटीसिपेटरी हुजूर 30/8 से मेरा पेंडिंग है हुजूर. स्पेशल कोर्ट है भी नहीं, वैकेट है हुजूर, सुनवाई हो नहीं पा रही है. अच्छा, इसलिए हुजूर सुनवाई नहीं हमारा हो पा रही है. क्रॉसिंग के लिए हुजूर हम फाइल किए थे तो हुजूर सुनवाई हमारा नहीं हो पा रही है आपकी बिल. जी हुजूर वहाँ पेंडिंग है हुजूर 30/8 से. कहाँ का मैटर है ये? प्रॉपर कोर्ट में हुजूर. कहाँ का मैटर है ये? पटना का हुजूर, सीबीआई पटना. पटना में सीबीआई कोर्ट नहीं है, स्पेशल जज हुजूर वैकेट कोर्ट. वैकेंट कोर्ट. जी हुजूर. और ये लोग क्या कोर्सिव एक्शन ले रहे हैं? तो कोर्सिव एक्शन हुजूर हमारे रिश्तेदार से लेकर के सब जगह वो लोग जा करके हुजूर नॉक कर रहे हैं. क्या मैटर क्या है आपके अगेंस्ट? डीए केस है हुजूर. एक मतलब रेलवे आरपीएफ के ये डीआईजी पे और हुजूर हम पर केवल इतना ही चार्ज है कि हम उनके मित्र हैं और हम हुजूर फ्लैट वो खरीदे थे, कोई फ्लैट बेच करके उसमें हमने उनको मदद किया था. जब हमको हुजूर नोटिस किया गया, हर नोटिस पर प्रॉपर हमने अपीयर हुआ, मैंने सारी बातें बताई विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी रीजन हुजूर हमको भी चार्जशीट कर दिया गया. लेकिन देखिए देते जाइए, लिस्ट में आएगा कब वो सीरियली देख लीजिएगा कब आएगा. हुजूर अगर नहीं किया जाएगा तो हम तो परेशान हो जाएंगे. बिना किया जाएगा उतना ही ना जितना हो पाएगा. माय लॉर्ड. हर व्यक्ति अगर खड़ा हो जाइए कि आज ही कर दीजिए हमारा तो हो. ऐसा नहीं हुजूर, हमारा तो फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है क्योंकि हम तो विदाउट एनी फॉल्ट हम आपके बार काउंसिल के नेताजी भी खड़े हो गए तो गार्जियन ही है हुजूर. हम लोग इतना देर से मेंशन कर रहे हैं. शाही जी बोलिए ना जल्दी. शाही जी बोलने में देरी करते हैं. मैंने आप इनवाइट कर दिया. रीट के वकील हैं, कहाँ चले यार हम लोग. और आप खड़े हो गए तो पहले तो आपका राइट हो गया. हम लोग की तरफ ही आ गए, कहाँ ये ना हम चिंतित है. माय लॉर्ड विल काइंडली रिकलेक्ट इन वन मैटर, वो जुलूस निकाले थे और सब एमपी एमएलए है, इन लोग का पद यात्रा वगैरह है हुजूर, बहुत दिनों से है. क्या है क्या ये? एक क्रॉसिंग है हुजूर 118 पर, पहले 79 पर था. क्रॉसिंग तो अभी टेकअप नहीं कर पा रहे हैं हुजूर. नए साल में स्टे कर देने का है, हम नहीं, इसमें नो ऑफेंस इज मेड आउट. ये लोग कारगिल चौक पर जुलूस निकाला, ये लोग का कंप्लेंट भी है, ये लोग पर केस कर दिया एक तो लोकल पुलिस, क्योंकि उस समय ये लोग अपोजिशन में था, अब तो रूलिंग में चला गया है. इसमें 4 एमपी एमएलए है, 4 एमपी एमएलए है. तो अब क्या, अब कौन आपको पकड़ने वाला है? नहीं हुजूर, पकड़ लेता है, तंग करेगा ना, बेइज्जत. रोज कोर्ट में जाना पड़ता है, कोई दिल्ली में रहता है 2 आदमी, तो सबको जो हाजिरी पड़ती है तो जाना पड़ता है. तो आपका मेंशनिंग गड़बड़ा गया, आप जैसे ही बोला कि जो है अब आपको कौन पकड़ेगा? नहीं हुजूर, सो नहीं, इसको कल टॉप 10 में लगा दिया जाए. हम 1-2 दिन हुजूर एग्री किए ऑन माय रिक्वेस्ट, माय प्रेयर वाज एक्सेप्टेड बाय योर लॉर्डशिप की कल कर देंगे, परसों हो जाएगा. फुल बेलेबल, ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेज है. हां, नॉन बेलेबल. तो आपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए नहीं अप्लाई किया? बेल ले लिया है, बेल ले लिया, लेकिन हाजिरी तो पड़ रही है, डेट दे देता है ना. देखेंगे नए साल में, आप स्लिप रखिए उसको, नए साल में जो टॉप 10-20 में कल परसों लगा दिया जाए. शर्मा जी अभी 4 दिन तो कोर्ट है, आप समझ रहे हैं 4 दिन में ये सब मैटर जिसमें ऑलरेडी आपको नहीं किया जाए, कहीं हमरा लाइने से पकड़ा जाए. हाँ, अगर पकड़ा गया तो ठीक है, अदरवाइज हम नए साल में. बोलिए साई जी. एक पुलिस प्रोटेक्शन के लिए केस है, एक भूमाफिया का नजर हमारे रोड किनारे 14 कट्ठा जमीन पर पड़ गया है. अब वो सारा सेल डीड म्यूटेशन सब हमारा है, लेकिन अब उनकी कुदृष्टि के चलते ना हमारा खेती करने देते हैं, ना हमको कोई काम करने दे रहे हैं. कहते हैं बेच दीजिए इसको. क्या हुआ? तो अब ये प्राइवेट कोई एफआईआर है क्या? नहीं, एफआईआर नहीं चल रहा है हुजूर. ये हम 120 पर 144 भी हुआ, सब चीज हुआ, सब हमारे फेवर में. तो हम क्या करें, प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट इंजंक्शन करें यहाँ से? ये खाली इनको हम नहीं कहते हैं कि इनके खिलाफ खाली हम कोई अगर आपका कंप्लेंट हो, दरोगा जी के यहाँ है, डीपीएसपी के यहाँ है, सब के यहाँ है. पुलिस में कंप्लेंट किया है? हाँ, किया है, उसी के लिए है जो खाली वो. तो पुलिस में अगर आपने कंप्लेन किया है, पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर किया उसको? नहीं, एफआईआर हमने नहीं, हमने पुलिस को प्रोटेक्शन मंगाया कि भाई हमको प्रोटेक्ट कीजिए सो दैट कि हम कल्टीवेट कर सकें.
दरोगा जी को दे रहे हैं। देखिए इस तरह के केसेज में प्रॉब्लम क्या है ना, खाली कंसीडर इस तरह के केसेज में हम एक्सपर्टी ऑर्डर करते नहीं। कि आपने कहा कि देखिए प्राइवेट रिस्पोंडेंट से हमको खतरा है, हाँ, वो कल्टीवेट करने नहीं दे रहे हैं, लैंड माफिया है। दैट वुड अमाउंट टू वर्चुअली पासिंग एन ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट अगेंस्ट देम। जी हाँ, क्या सिविल डिस्प्यूट है, फिर उसको हम नोटिस करेंगे, नोटिस करे बिना उसको हम कुछ नहीं हुआ। एसडीओ साहब के 144 चला, ये सब जो हमारे फेवर में डिसाइड हो गया। सेल्डीज म्यूटेशन सब हमारे नाम से, फिर भी इनकी नजर हमारे प्रॉपर्टी पर है। अब हम क्या कर सकते हैं? दरोगा जी क्या जाते हैं, वो कुछ सुन नहीं रहे। इंट्रीम ऑर्डर नहीं हो सकता है। आप अगर कुछ खाली कह दिया जाएगा कि आपको फोर्सफुली अगर अनलॉफुली डिस्पोजेस करेंगे तब हम आपको रिस्टोर करा सकते हैं। डिस्पोजेस तो हमको नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। डिस्पोजेस अभी आप आराम से रहिए। खाली हमको दरोगा जी खाली हमारा दरखास्त कंसीडर। अभी आप आराम से रहिए। अभी हम बिना सुने हुए अदर साइड को लैंड मैटर्स में हम ऑर्डर नहीं करते। चढ़ेगा तब लिस्ट पर। लिस्ट पर क्यों नहीं चढ़ेगा? लिस्ट पर तो आ ही जाता है विद इन 1 वीक। हाँ, तो छुट्टी के बाद कभी आपका क्या है, टोकन से मेंशन कर रहे हैं क्या? ना ये है ही है, नंबर है इनका CR 1252 है ना जी। तो आ जाएगा, छुट्टी के बाद आ जाएगा। प्रॉपर प्रोटेक्शन वाले जितने भी मैटर्स हैं आप देखिए, हम सब चढ़वा रहे हैं। आपको मेंशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी अच्छा। I am putting a question to myself about the remission matter which is today at serial 55. उसमें टाइम कुछ नहीं दिया हुआ है। Whether my lord will take up it और टाइम फिक्स कर दिया जाए कल के लिए। नहीं 55 पे है। आज कल वाला में हम बिलीव हम लोग हैं हुजूर, हम लोग रेडी हैं। नॉट दैट आज उसको मेंशन कराए हैं। आप लोग अगर कोऑपरेट कीजिएगा तो हमने कहा है कि उसको हम होमवर्क में ले रहे हैं अपने छुट्टी में, चूंकि हम रहेंगे यहाँ तो हमारी कोशिश होगी कि सबको हम, आप लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं उस केस के लिए। तो 2:30 बजे 3 बजे कै बजे कहा जाए? नहीं, अभी कॉल होगा इस सब केस के बाद इन सीरियल नंबर 55 है। ऊपर से आप लोग छोड़िएगा, जैसे ही मेंशनिंग तो ऊपर से सारा केस निकल जाएगा जल्दी। ये सब ओल्ड केसेज है, मोस्ट ऑफ देम जो है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वाले केसेज है, वो सब हो जाएगा। Lord, may I permitted to mention, Your Lordship, one criminal revision, Your Lordship, against the cognizance order I have filed, Your Lordship. There is a case and counter case between the parties, Your Lordship. And What do you want? Tell me. Your Lordship, इसको किसी भी दिन सुन लिया जाता, छुट्टी के सुनने बाद का ही। समय कहाँ है अभी? छुट्टी के बाद ही हुजूर। वो इंटरिम रिलीफ नहीं चाहिए ना आपको? नहीं चाहिए हमको, लेकिन हुजूर प्रॉब्लम ये है ना कि कोर्ट मेरे चार्ज फ्रेम करने के लिए परेशान कर रहा है। इसको छुट्टी के बाद ही लगा दिया जाए, 5 मिनट का केस है। छुट्टी के बाद मेंशन हुजूर अभी लगा लीजिए। May I permit it to mention, my lord, FIR है हुजूर। criminal writ, your lord. FIR है, 2018 का केस है। रिट फाइल किया हुआ है क्रिमिनल इंस्टीट्यूशन ऑफ FIR जी 18 का मैटर। May I permit it to mention, my lord, a case, your lordship. This is relates to the issuance of against the order of 82 process, my lord. Since the occurrence was taken place on 7/11/22, and the IO process has been taken out because you are not putting appearances. No. I have already filed my anticipatory bail petition, which It is is pending here. Yes, your lordship. Not being taken up. Not being taken up, and your इसको तो 22 से पहले हो जाएगा। कितना इस तरह का है कि तो कैसे उसको कर सकते हैं? Your lord, थोड़ा टाइम दे। Your lord, I may be permitted to, my lord. Just a minute. Yes. Your lordship, I had mentioned a case of mining and material mattering which the vehicle was seized for 4 years back, and 470 rupees was 470 was fined by the mining inspector. My lord had accepted my request, and it was posted in the list of 88 on that date. Till first Which hour date? it Which was date? kept on 31. Which Therefore, date? I did not come. No, which date? My lord, this is a criminal division. क्या हुआ उसमें? कोई ऑर्डर पास हुआ है? Whether any order has been passed? No, my lord, no order. Only the order is party has not present, put up in a consolidated list. So you were not present. So Yes, but your lord, I agree. My lord, 31 नंबर तक पहले टाइम हुआ था, हमका 88 नहीं पकड़ाएगा। हजूर अगर तो समझ भी ना, इसको कर दिया जाए। बहुत अच्छा है। पार्टी बहुत बेइज्जत कर रहा है, पार्टी बहुत ये कर रहा है, तंग कर रहा है। हमने तो टेकअप किया, आप नहीं तो क्या? नहीं, हमको ये हो गया कि जो 31 तक चला था 88 नहीं पकड़ाया। एक्चुअली इट वाज माय लिस्ट पर चल रहा है मैटर, लिस्ट पर चल रहा है जी। लास्ट आप ऐसा कीजिए, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप अदर साइड के जो लॉयर हैं, कंसोलिडेटेड लिस्ट में चला गया ना सर। कोई दिक्कत नहीं है। आपका नंबर नोट करा दीजिए,
कंसोलिडेटेड लिस्ट हमारा ही लिस्ट है ना, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो अदर साइड के लॉयर हैं उनको जरा रिक्वेस्ट कर लीजिए माने, और हमारा असर अब उमर है इतना दौड़ चुका। आपकी बात जरूर मानेंगे। आप इसको एडमिट रख लिया, हम बोल भी देंगे। आपको कहा ना कि उसमें चूंकि आई हैव ऑलरेडी पास्ड एन ऑर्डर यस ना, तो वो लिस्टेड है अंडर कंसोलिडेटेड लिस्ट जी। आप अदर साइड के लॉयर को लेकर के आइए, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करके, आई विल हियर योर केस, दैट इज नॉट डिफिकल्टी। Considering your request and as a senior member of the bar, I will accept your request. Yes. My lord. In the list, your lordship, one juvenile bail matter is there. Juvenile bail take up करेंगे। 325 serial. ठीक है। My lord. Some time is mentioned. करेंगे, एक आध 2 दिन समय देंगे। सीरियल नंबर 317 पे हमारा केस है माय लॉर्ड, आज के लिस्ट में क्रिमिनल रिवीजन है माय लॉर्ड। उसमें पर्सनल अपीयरेंस डायरेक्ट हुआ था कोर्ट के द्वारा, जो जिनका पर्सनल अपीयरेंस हुआ था डायरेक्ट हुआ था वो हेडमास्टर है माय लॉर्ड। तो वो आज आए हैं, लेकिन 317 सीरियल पे माय लॉर्ड टेकअप हो जाएगा उसको। My lord. 215 टाइम दे रखा है उसको। तो उसमें हमारे केस के जस्ट बाद है माय लॉर्ड 215 का टाइम, तो अगर उसको पहले कर दिया जाता तो थोड़ा स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हित में, क्योंकि हेडमास्टर है तो बार बार उनका आना भी सही नहीं है माय लॉर्ड। हेडमास्टर है तो उनको क्यों बुलाया गया था? उनका पर्सनल ये क्रिमिनल रिवीजन वो फाइल किए थे अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस में। तो अपनी पत्नी को अगर नहीं दे रहे हैं, हेडमास्टर बने हुए हैं, रुपया ले रहे हैं सैलरी, हम वही तो और वाइफ को नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए उनके कंडक्ट की वजह से उनको बुलाया गया। हम वही शो करना चाह रहे हैं मतलब। हमने एक सप्लीमेंट्री फाइल किया है जिसमें हमने दिखाया है कि हम लगातार मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। एनीवे वो तो कॉल होगा एट द रिलेवेंट टाइम ओनली ना। काउंसिल फॉर द अदर साइड वुड आल्सो बी देयर। My lord. एक फिक्स कर दिया था टाइम, तो फिक्स है टाइम ऑलरेडी। राजेश कुमार सिंह, हाँ टाइम फिक्स है 2:15। आप लिस्ट देखिए ना, लिस्ट नहीं देख रहे हैं आप। रजिस्ट्रेशन का मैटर हुजूर है इसमें। रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन मेंशन। My lord. टोकन नंबर पर बोलिए। Permit to seek amends in the matter, my lord. It is the fact that I have the serial number 58, my lord. What do you want? If you recollect, it is for the final argument. So my only request is, my lord, it should be taken up. Wait. You people are only taking my time. My lord. Milord, may I mention? Yes. बोलिए। For direction on the respondents to institute the first information report, Milord. My lord, I may be permitted to mention a criminal writ, my lord, 1524/22, my lord. In this case, my lord, I am the owner of the property. I have been forcefully dispossessed from the land mafia, my lord. My house has been demolished, my lord, and construction is going on, my lord. My lord, the gist of this case is I taken loan from the Allahabad bank. A stay has been granted by the DRAT Allahabad, my lord. Despite my property has been sold, my lord, after a stay, my lord, the same has been demolished and fresh construction is started, my lord. And when I approached to the concerned police station, I was illegally detained in the police station for the 24 hours, my lord. And FIR was also there is a instituted. stay on the sale. Yes, There my was a lord. stay on the sale. Yes, my lord, a stay on the sale, my lord. And when was it sold? It was sold recently, my lord, in the year 2022, my lord. Your appeal is still pending before DRAT. Yes, my lord, it is still pending, my lord. Did you bring it to the notice of the My lord, tribunal? My lord, I have directed to my client to challenge those orders before the DRAT Allahabad, because a stay has been granted by the DRAT Allahabad despite the property has been sold, my lord. Even after repeated reminders, my lord, the person who has purchased the property is not appearing. 2 times paper publication were done. He is not appearing. This is the single dwelling house, my lord. I have been forcefully evicted. My house was demolished. Fresh construction is going on over there. Which place is that? Muzaffarpur, my lord. Ahiyapur. Permitted to mention my lord, criminal division number 484/2022, my lord. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस और ये जबकि डिफेक्ट रिमूव कर दिए हैं टोकन नंबर पर हम मेंशन वजूद कर रहे हैं। एक्चुअली जो है 3 महीना से ज्यादा फाइलिंग का हो गया, टोकन नंबर पर यहाँ नहीं होगा। टाइम रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है। आप वहाँ जाइए, क्रिमिनल एप्लीकेशन एंड मोशन बेंच। माय लॉर्ड, क्रिमिनल रिट है माय लॉर्ड, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए सिग्नल पुटिंग दीजिए, वो आ रहा है ये डायरेक्शन फॉर अरेस्टिंग और
अरेस्टिंग के लिए माय लॉर्ड एफआईआर हुआ लिया अरेस्टिंग के लिए माय लॉर्ड। रुकिए अभी ये कवर्ड मैटर है माय लॉर्ड, तो क्या कवर्ड मैटर है जो एफआईआर हुआ लेकिन अभी तक कोई इस पे कौन से जजमेंट से कवर्ड है ये? माय लॉर्ड लिखे तो नहीं है, देख लेते हैं। देख करके बताइए। हुजूर एक ठो केस हमने पहले मेंशन किया था, क्रिमिनल डिवीजन 755-22, तो हमको पता नहीं था कि बाहर में लिस्ट आता है, तो उसमें हमारा 15-12 को डेट था और आज हमको ये बात पता चला। तो क्या आज 271 सीरियल पर है आज के लिस्ट में? क्या हुआ 15-12 को? क्या हुआ उसमें? 15-12 को हम पता नहीं चला, हम आए ही नहीं। आप नहीं आए तो आपकी भी स्थिति वही होगी। तो हुजूर अच्छा आप ये बताइए, केस सिर्फ वहाँ नहीं था ना, केस तो लिस्ट पर भी आया। तो लिस्ट पर टाइम नहीं था हुजूर, नीचे दिया 54 हो ही नहीं सकता, 1 बजे वाले लिस्ट में होगा आपका। वो नहीं, आप देखिए वैसे नहीं होता है मेरे यहाँ। आप देख लीजिए 1 बजे वाले, इनका मैटर 1 बजे वाले लिस्ट में था ना। हाँ अभी लिस्ट पे है, आज 271 सीरियल है। 1 बजे वाले लिस्ट में था आपका मैटर 15 तारीख को। डेफिनेटली तभी ऑर्डर पास किए होंगे, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ तो अभी कोई ऑर्डर नहीं, हमको लगता है कि ऑर्डर नहीं कोई पास हुआ है 15-12 को। क्या हुआ? उसी में आएगा, उसी में आएगा ना। हाँ आ जाएगा आपका उसमें। आज होगा क्या? आज नहीं, आज नहीं होगा, आ जाएगा। वो बता रहे हैं कि उसी माय लॉर्ड हमने कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं पास किया है। इसी दिन आएगा। हाँ उसमें कोई डेट दे दिया होगा, इसलिए आ जाएगा उसमें। आइटम यस मिस्टर भारत भूषण। 282 पर रिलीज ऑफ वकील का चढ़ा हुआ है, सुन लिया जाता किसी तो ठीक है, वकील हो जाएगा। 282 है तो प्रायोरिटी तो आपको दे ही दिया गया है ना, और वेट कर रहा है वो अपना एक एक करके जैसे आएगा। ठीक। 54 आइटम में माय लॉर्ड पर्सनल अपीयरेंस है, डीएम एसपी बोथ ऑफ देम हियर माय लॉर्ड। ऑफ विच प्लेस? इन माय लॉर्ड क्रिमिनल रीट नंबर 1404 कस्टोडियल डेथ का वो केस है। विच प्लेस? दरभंगा। बोथ आर हियर माय लॉर्ड। I'll take up that matter. Take up that matter as first case. कॉल कर दीजिए उनको। 54 का Did you inquire into that? Sir, we reviewed What is case the of position? postmortem, sir. No external injury was found. We called doctor who has done postmortem report. So according to doctors, cardiopulmonary failure was reason of death. No, but several injuries have been noticed on his body. That is the case, if I correctly remember. Sir, हम लोगों ने He has suffered injury on his head, and then he has several sign of assault on his body. Certain marks of electrocution also. Electrocution also. सर बैक साइड जो है वो डेथ होने के बाद जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से जो ब्लड जमा होता है उसके कारण वो येलोइश दिख रहा था। सर हमने डॉक्टर से इस मामले में डिटेल में डिस्कशन भी किया। नहीं, उसका पोस्टमार्टम का आपने देखा? सीसीटीवी वगैरह? सीसीटीवी फुटेज भी देखा है सर। It was conducted under this CCTV. जी सर, फुटेज के वीडियोग्राफी फुटेज के साथ किया गया है सर। किया गया है जी सर। सर ये ह्यूमन राइट कमीशन में भी मैटर है सर, और जुडिशियल इंक्वायरी भी इसकी चल रही है जैसा कस्टोडियल डेथ में होता है सर। ओल्ड मार्क पैर पे कट के हैं, एक आईज के पास एवरेजन था। जुडिशियल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। जी सर। Who is conducting the inquiry? So some municip judge, I don't remember the name sir, but it's in the progress. एक तो गवाहों का गवाही उनके यहाँ बचा हुआ है, बात हुई थी हमारे ऑफिस से, तो उसके बाद उनका रिपोर्ट मिलेगा। Well, even assuming everything to be true, I'm asking this question. No, to no. myself. Then there is another issue, na? If a judicial inquiry has already been instituted, and that is going on, you should have disclosed that in your petition. That was not informed, Millards, and moreover, they refused to register the FIR against the certain incidents. You are not understanding. A judicial inquiry is in accordance with the provisions of this ARPC. Millards. If that has already been instituted, then in that inquiry would only reveal, after taking a statement of all the witnesses, the learned magistrate shall record his opinion. But information in that regard was not brought to the notice of the petitioner. Not brought to the notice of the petitioner. Petitioner has not been called. Okay. How it can be? He is saying that witnesses have been examined. Yes sir. Yes. Yes sir. How many witnesses have been examined? Sir, I don't know the exact numbers, but I was informed कि 2 गवाह और बचे हुए हैं,
उस जुडिशियल इंक्वायरी में जिनकी Do you know some case number, etc.? Who has instructed you on this? सर माय ऑफिस स्टाफ is Ask him what is the case number. the Whether he is judicial aware inquiry- of. Sir, judge, the judicial inquiry number, sir. Yes, case number, and then what is the present stage of that judicial inquiry? I would have called for a report from the learned magistrate itself. But he says that it is not within his knowledge, in the knowledge of this petitioner. Sir, we don't get information from the judge who is conducting the inquiry, sir. We just. No, they must have called you. Yes, sir. Because the incident took place in the jail, sir. He must have called the jail authorities. Must have called the jail authorities. Sir, sure, sir. Must have been recording the statement of the witnesses. SP office is not under information of any of this. Has no information. Do one thing, find out from the jail superintendent. Sir. And you call upon your client. Ask her what is the present position of this inquiry. Because it would not be proper to pass order when the judicial inquiry is already going on. ठीक है? I will not even record his statement because that may prejudice the inquiry. लिखिए, pursuant to the last order. Do you have any report on this? Have you prepared any report? Yes, sir, we have submitted. I filed one counter affidavit. You have filed this with counter affidavit. My report with all the reports, madam. Cases of custodial death are increasing. This court is finding that one after another, every week I am finding one case or two cases coming to me in which custodial death is being alleged. And I don't know what is the present position of inquiry, but prima facie he had satisfied me that day, showing several photographs of the deceased. इसमें apparently those injuries may be noticed by anybody with naked eyes. When did you join at this place at Darbhanga? Sir, January this year, sir. January this year. And this occurrence is of? June, sir. June. So it is during your period. Sir. Ligue pursuant to the last order, the district magistrates, your name please? Rajiv Roshan, sir. Mr. Rajiv Roshan and Mr. So-and-so? Avkash Kumar. Mr. Avkash Kumar, the Superintendent of Police, Darbhanga are present. Full stop, a counter affidavit has been filed. Full stop. Next, at this stage, it has been informed to this court by the district magistrate Darbhanga that in this matter a judicial inquiry is going on by a learned judicial magistrate of the district court at Darbhanga. Full stop. The superintendent of police has informed that in fact some of the witnesses have also been examined, but he is not fully aware of the present stage of the said proceeding. Next. In the aforementioned circumstance, this case is being adjourned to 16th of January 2023. Full stop. The petitioner shall file a supplementary affidavit stating the present stage of the judicial inquiry. Next, also call for a report from the District Judge Darbhanga as regards the pending judicial inquiry and the stage of the same.
as also the time likely to be taken in conclusion thereof by the London magistrate. Full stop. List accordingly, personal appearance of the district magistrate and the superintendent of police Darbhanga is dispensed with. Yes. Item number 1. Bachchan ji Ojha. Yes. In this case, my lord, counter has been filed, and it is stated that FIR was lost. Has already been lost. But nothing was done, my lord. फिर बट वाला सवाल मत लगाइए, ये जो है ना बट वाला क्वेश्चन में FIR was lodged, but no action was taken against the accused persons, my lord. And the petitioner, Rajendra Ojha, is more than 75 years old person. He was ousted from the residential house and he is on the rented house, my lord, living in rented house. And they are not attempting to arrest the accused persons or try to. ये सब देखिए बहुत झगड़ा आ रहा है इस तरह का बाप बेटे का झगड़ा, और कुछ एक केस में तो रिपोर्ट ये भी आ रहा है कि जब आप यहाँ से ऑर्डर लेते हैं और जब पुलिस वहाँ जाती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, वो मेरे बेटे के ऊपर कोई एक्शन मत लीजिए. लिखिए. Mr. Bachchan Ji Ojha, learned counsel for the petitioner, admits that FIR has already been registered. Full stop. Learned counsel, however, submits that after lodging of the FIR, the case has not been investigated. अभी तक पुलिस रिपोर्ट नहीं सबमिट किया है. We have filed controverted with the report of DSP. Is a completely family dispute, lordship. He has 5 sons. He lives with youngest son. It is stated in paragraph 8 of the I'm only counter. asking whether you have filed a police report. No. File a report saying that it is a false case. Or it is a case of civil nature, purely civil nature. But you cannot keep the investigation pending. Lordship. Learned counsel, however, submits that after lodging of the FIR, till date, no police report has been submitted in the court below. Next, Mr. So-and-so, learned AC to AG3, submits that in this case, the dispute is in the nature of a family dispute. Full stop. It is, however, admitted at the bar that police has not submitted its final report in the court below. Full stop. In the aforementioned circumstance, this writ application is being disposed of with a direction to the Superintendent of Police Aurangabad to look into the matter and ensure submission of police report at the earliest in the court below. Full stop. This application stands disposed of accordingly. Item number 2. Dilip Kumar. No one appears for the petitioner to place this writ application. Mr. N.H. Khan, learned SC1, appears for the state. Next, on perusal of the writ application, it appears that the petitioner has moved this court directly for a direction to the respondent authorities to lodge a first information report. Full stop. He has not followed the procedures prescribed for this purpose under the Code of Criminal Procedure. He has also provided in the judgment of the Honorable Supreme Court in the case of so-and-so, Priyanka Srivastava. This application is
but that's not fit to proceed. It is disposed of accordingly. Item number 3. Manish Kumar. Yes. Lordship, May I- FIR has already been lodged. Already lost. Lordship, what I may submit, I have already filed a one rejoinder, Lordship, and they have filed one counter affidavit in this case, Lordship. But the counter affidavit, it is misleading fact has been brought on record before. Am I here to decide the facts in the writ application? No, Lordship. Then They have already submitted final form. yes. But in the counter affidavit, they have said that matter was under investigation. May I permit to? All right, all right. So you admit that FIR has been lodged, case has been investigated, and final form has been submitted. No, Lordship. I submitted an application regarding death of my brother, Lordship. A UD case was registered, and in the counter affidavit, it was said that a UD case number, paragraph number 10, Lordship, of counter affidavit, may have a look, Lordship. Ki Para 10 of counter affidavit. Yes. That after completion of investigation of UD case number itna, the investigating officer who is at present in the SHO Rajouri police station, district Nawada, was submitted a written report on 21/3/2022 to the SHO Kotwali police station that offence committed against the brother of the petitioner comes under the category of cognizable offence and requested to lodge a formal FIR against Priyanka Kumari and her family members under section 306(34) of IPC. What I submit, Lordship, actually they have submitted final report. It was not brought on record by the learned state council, Lordship, for which I have already filed one rejoinder, Lordship. On the I have submitted a written report on 13/11/2017, Lordship, and on that day they have submitted final form, which was brought on record by Annexure 3 in my rejoinder application. So you admit that final form has been submitted? Lordship, अगर फाइनल फॉर्म जो सबमिट हो गया था, यही तो आपको हमने पहले पूछा, आपने कहा नो मिला। जी। एक बार आपने बोला व्हेन आई आस्क यू द हमको लगा कि क्वेश्चन, हजूर FIR हो जाने के बाद फाइनल फॉर्म हुआ ये चीज। FIR हुआ 21/3/22 को। जी। ठीक है जी। फाइनल फॉर्म कब सबमिट हुआ? 13/11/2017 को। 13/11/2017 को। जी। मेरे एप्लीकेशन पर इन्होंने UD केस रजिस्टर्ड किया और ऑन द सेम डे फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया। जब इस कोर्ट से काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आदेश हुआ तो हड़बड़ी में इन्होंने इस फैक्ट को छिपाते हुए कि हमने फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया, FIR लॉन्च कर दिया, 5 साल के बाद FIR लॉन्च कर दिया, और इसको इन्होंने काउंटर एफिडेविट में कहीं नहीं लाए हैं। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया इनके अनुसार से, तो कैसे ये FIR रजिस्टर्ड कर दिए? हजूर देखा जाए, हम इसको एनेक्सर 3 में लाए हैं अपने। हम इसको एक्सप्लेन, एक मिनट बोल लेने दीजिए। जी हजूर, हम इसको हजूर पैरा 7 में हम सारा एक्सप्लेन किए हुए हैं अपने रिजॉइंडर में, लॉर्डशिप। पैरा 7 ऑफ माय रिजॉइंडर एप्लीकेशन, लॉर्डशिप। यस, पैरा 7 of my rejoinder, lordship, that the statement made in paragraph number 10 of the counter affidavit under reply is false, wrong and misleading, and as such is fit to be rejected by this honorable court. It is only subsequent development by the police to save their fault. It is humbly submitted that petitioner sought information under RTI regarding the development of the matter of the death of his brother. It was informed to the petitioner that on his application UD case number 6 of 2017 was registered on 13/11/2017, and it appears on the same day final form was submitted by one Darbari Chaudhary, the then SI of Kotwali police station, in compliance of oral order of then SI cum SHO Kotwali police station. So it appears that in UD case number so and so final form was submitted, neither it was brought on record nor it was made. In the counter affidavit it was suppressed and tried to mislead the honorable court. और इसके बाद पैरा 8 में लिखे हैं कि it is humbly submitted that from very first day. All right. बोलिए मिस्टर अकबर। इसमें जो अक्रेंस है 7/11/2017 का, इन्होंने कहा कि मेरे भाई मिसिंग हैं। उसके बाद 13/11/17 को डेड बॉडी मिलती है, हम इन्फॉर्म करते हैं, यूडी केस लॉन्च होता है। यूडी केस में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इट वाज फाउंड के इनके ब्रदर जो हैं वो लव अफेयर था प्रियंका से, एंड
क्योंकि उनके फैमिली मेंबर हरास कर रहे थे, ही हैज कमिटेड सुसाइड एंड फाइनल फॉर्म सबमिटेड। ये फिर एक 18/11/17 को एक एप्लीकेशन देते हैं, उस पर ये आए थे कि हमको एफआईआर नहीं होगा। हम लोग एफआईआर कर दिए हैं 306 में, जो यूडी केस में जो फाइंडिंग हुआ उसी बेसिस पर एफआईआर हो चुका है। अब इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। जी, इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। जी जी हाँ हुजूर, ये कर देंगे। आप 17 से क्यों पेंडिंग रखते? हाँ, वो 306 में उसी टाइम कर देना चाहिए था। ये है, बट हो गया है एफआईआर। अब इस लाइट में अगर वो यूडी केस में, जब आपको यूडी केस में ये पता लग गया कि उनको हैरेसमेंट की वजह से इन्होंने सुसाइड कर दिया, जी, तो फिर आपने फाइनल फॉर्म कैसे सबमिट कर दिया? Why did not you? नहीं, वो फाइनल फॉर्म सबमिट यूडी केस में हमने ये किया कि आप उसको कन्वर्ट करते ना। हाँ, कन्वर्ट वो 306 में करना चाहिए। तब जी, तो सब तो करना चाहिए था, सब आपने नहीं किया। जी। His grievance But is, now the his FIR has grievance been is lost, Your Lordship. lost, And- but you have been sitting over that. जी, You have only done an empty formality because writ application was pending. And it was going to be taken up, so you have, just in order to save your skin, you have acted hurriedly. जब हजूर ये फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिए तो अंडर विच प्रोविजन फिर से ये एफआईआर कर दिए उसी मैटर पर? नहीं, फाइनल फॉर्म सबमिट हुआ तो उसी फैक्ट पे हुआ। फाइनल फॉर्म इनको नहीं करना चाहिए था, because he himself जी, says हुजूर, वो सही है वहाँ। जब हजूर in course इन्वेस्टिगेशन of inquiry of that unnatural death, he had reached to a conclusion. सबमिशन है लॉर्डशिप, जब ये फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से ये चले भी गए, ये दूसरे जगह चले गए, नवादा चले गए, कोतवाली नवादा में चले गए, और जब देखे कि यहाँ पर काउंटर फाइल करना है तो वहाँ से पता नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहता ऑन दैट सर्कमस्टांसेस दे में लॉज एफआईआर। कहाँ का है? खगोल का है? यहाँ कोतवाली का है, और जो उस समय के आईओ थे वो ट्रांसफर होकर चले गए रजौली में, एसएचओ बन गए नवादा में। और जब यहाँ से काउंटर, जब हमको ये हजूर, जब when the final form was submitted, What do you want? You have conveyed your case to me. Now what do you want at this stage? the Supreme Court has said in the Lalta case if the any hearing By that stage is over, they have lost one FIR. अब क्या चाहिए सो बताइए। अभी 5 साल के बाद किए हैं मेरा केस, तो क्या करना है सो बताइए ना action may मुझे। be taken against those police officer, Lord. Have you made him a party in this writ application? No, Lordship. I have Then- not been in the party, Lordship. Then- But may I permit, Lordship? The Supreme Court has said in the Lalta Devi case. All Lordship, right, that in view of the Supreme Court judgment, they have now registered FIR. Please try to understand. Lordship, may I permit to make them party, Lordship? Take appropriate steps Because separately. Once the Lordship final form was submitted, and my case was मेरा केस आप इसी, आपका कोई केस खराब नहीं हुआ, आप पकड़े हुए हैं, आप अननेसेसरी उसको जो है ना खींच रहे हैं एक ही बात को के द्वारा। मेरे हजूर के Now सामने FIR has been instituted. This court will direct. कहाँ का केस है? पटना? जी, पटना। I will direct the SSP to supervise the case and take an appropriate they view have of the matter. suppressed those facts in the counter affidavit. So far as your grievance against the then ASI, who is now SHO of Rajoli Police Station, is I have no any concerned, personal grievance, Lordship. But they have lost the 5 valuable years, Lordship. so you have a grievance. 5 साल उन्होंने So बर्बाद you किए। have a grievance. That So if you have any grievance, that grievance still exists, Lordship. आप सुनना ही नहीं जी चाहते। जी जी हजूर, जी हजूर। आप जो एक लाइन पकड़ लिया है ना, बस उसी लाइन पर आप चले जा रहे हैं। नहीं नहीं हजूर कहा हजूर। आपको अगर कोई ग्रीवांस है, you raise your grievance separately before his disciplinary authority, pursue that complaint, grievance. If you will not be satisfied with the decision of the disciplinary authority, then you can come to this court. Lordship, Lordship. तो लॉर्डशिप क्या, अब आप तो वकील हैं, आपको इतनी बात समझाना पड़ेगा। हजूर ऑर्डर में लिखा हम कोई कंसल्टेंसी खोल के रखे हुए हैं क्या? नहीं नहीं हमारा सबमिशन है। हर चीज पे जो है, असल होता क्या है ना कि ऑर्डर लिखाने में जो इंटरटेन करते हैं आप लोगों को ना, कि आपको सेटिस्फाई करने के बाद ऑर्डर लिखाएं, उसमें बहुत ज्यादा आप लोग लिबर्टी ले लेते हैं।
और इसी में हम आपको उतनी लिबर्टी नहीं दें, हम समझ लिया क्या है नहीं है करके ऑर्डर लिखा दें, तो फिर जा करके बाहर में बात कीजिएगा कि देखिए सुने नहीं हम। दोनों हालत में आप लोग जो है ना कोर्ट को प्रोसीड करने नहीं देते। लिखिए, थर्ड लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड मिस्टर इकबाल लर्नेड एसी टू GP5 for the state. Petitioner in this case is aggrieved by and dissatisfied with the inaction on the part of the then ASI of police, namely one Darwari Chaudhary, who had conducted an inquiry into the unnatural death of the brother of the petitioner, and even as he found that the brother of the petitioner had committed suicide because of the harassment meted out to him by the family of the girl with whom he was in an affair, the said SI, instead of lodging an FIR, proceeded to submit a final form in the court below. Full stop. Next, Land Council submits that at this stage, only in order to save his own skin, in a hurry, one case being Kotwali PS case number 139 of 2022 has been lodged on 21/3/2022 under section 306/34 IPC. We'll stop. In this manner, 5 years of precious time have been lost, and the grievance of the petitioner could not be taken care of. Next, Mr. Iqbal, learned counsel representing the state submits that in fact, in course of inquiry of the UD case itself, it had so transpired that brother of the petitioner had committed suicide because of the harassments meted out to him by the other side, the ASI had filed a final form. But at this stage, a first information report has been lodged, hence appropriate direction may be issued to the concerned police authorities to properly investigate the case and submit a report in the court. Next, having regard to the facts and circumstances of the case, this court is of the considered opinion that there is an inordinate delay on the part of the concerned police officer in registration of the first information report. Full stop. This aspect of the matter may be brought to the notice of the disciplinary authority of the concerned police station, who will take an independent view of the matter and redress the grievance of the petitioner on this score. Full stop. Next, as regards Kotwali PS case number 139 of 2022, this court directs that the SSP Patna cell issue appropriate instructions for proper investigation of the case, proper and impartial investigation of the case, and submit a report in the court below within a reasonable time. Next, this application stands disposed of accordingly. Item number 4, Jitendra Kumar Giri. Yes.
क्या हुआ, लॉज हुआ कि नहीं हुआ? Yeah, I believe that has not been lost. Now the state will say. Yes. इनका जो रिलीफ पोर्शन है हुजूर, इसमें तो एग्रीमेंट का पेपर लगाए हुए हैं। The agreement, that is not. पहला जो हुजूर पास फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है। For lodging the FIR. हाँ, तो देखिए इनका लिखा हुआ है। And must bear under commanding directing the respondent to issue FIR in the light of letter such and such under the signature. First FIR देखिए वो तो एग्रीमेंट का पेपर है। एग्रीमेंट कहाँ है, देखिए ये जो है ना 2-3। अरे भाई तो आप इसमें लिखते ना, अपने रिलीफ पोर्शन में लिखते ना, फैक्ट्स में लिखा है। और जो लेटर नंबर देखा जाए, लेटर दैट वाज इशूड फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ द FIR। क्या है, आप जो है PIL फाइल किए हैं क्या यहाँ? No, Lordship, for. Then who are you? Lordship, I am the in charge as master of the school. Lordship, the construction of the work of the building that was entrusted to me, that was going on. In the Lordship, in course of construction, Lordship, there some persons they demanded Rangdari. To that effect, Lordship, I asked Lordship made the complaint to the बिहार शिक्षा परियोजना सब शिक्षा पदाधिकारी and then he issued the letter. आप पर FIR वगैरह हुआ है क्या इसमें? No, awareness law नहीं। Kindly see section 2 नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पैसा वगैरह ले करके स्कूल नहीं बना तो। No, that is जवाब Lordship, that work was done. And Lordship, they demanded that several times they demanded Rangdari Lordship. तो आपने DPO को लिखा, आपने दूसरे अथॉरिटीज को लिखा। जी, DPO को लिखा। You did not go to the police station to lodge a first information report. Lordship, DPO को मैंने लिखा, वो लोग लेते ही नहीं है, चूंकि लोकल देखा जा बताते हैं क्या इसमें। Nothing is there. हाजू Lordship one thing. Please don't waste court's time. Please don't waste court's time. They are the Lordship, the local people. देखिए, I do not want to comment. जी. Please don't invite my comment. It will go against you. It's a frivolous kind of writ application that you have got filed in this court. That is the matter. Where is your statement that you went to the police station? You submitted a written complaint with such and such police station? Where is your statement that when police did not lodge FIR, then you made this complaint with the superintendent of police in terms of section 154(3)? Where is your statement that if SSP did not look into your grievance, then you filed an application in the court below under 156(3)? इसीलिए कहते हैं कि अननेसेसरी कमेंट मत इनवाइट किया कीजिए। और कैमरा पर आपके जो है ना क्लाइंट्स भी देखेंगे। आपने क्या किया, 5 साल से इस केस को पेंडिंग रख करके यहाँ गलत एडवाइस करके रिट फाइल करा दिया आप। बिल्कुल फ्रिवलस केस। लिखिए, petitioner has filed this writ application for a direction to the respondent authorities to lodge a first information report. Full stop. The writ application is pending since the year 2017. Full stop. Next, perusal of the statements made therein would show that at no point of time the petitioner has submitted any written complaint with the police station. Full stop. There is no averment in the writ application that the police did not register the FIR or that the petitioner made a complaint with him before the superintendent of police under section 154(3) CRPC. Full stop. Next, if this is the position, then this court would have no hesitation in holding that it is a misconceived and misplaced kind of writ application which has been filed on wrong advice. This application is dismissed. Item number 5, Rajesh Kumar Sinha. Yes. This has been filed for a direction to lodge the FIR and investigate the matter. What happened? Lord, sir. FIR has been lost. It has not been, my lord, sir. It has not been lost.
Where is your statement that you had moved the court below also? Lords, That is not there. court below, my lords. Yes. He has not moved, my lords. तो क्यों आप क्यों रिट फाइल करा देते हैं? इस तरह से कोर्ट को बर्डन करके रखा हुआ है आपने. क्या सीआरपीसी भी नहीं देखा आपने? जजमेंट्स भी नहीं देखा? इतने सारे जजमेंट्स हैं, कहीं कोई स्टेटमेंट भी आपका नहीं है. Written statement, my lords, which has been filed by the petitioner, my lords. तो अगर आप पुलिस स्टेशन में दिया नहीं, रिटन कंप्लेंट रजिस्टर किया एफआईआर में, Then I have sent through registered post, my lords. may have sent. My lords. You had a remedy. You should have filed it before the learned CGM under 156(3). There is no statement in your writ application that you have done so. No, my lords. Coming directly to this court. My lords. Likhiye, this is yet another case in which the petitioner has not followed the procedures required to. My lords, may I permitted to withdraw this case with liberty to move before the court below under section 200 of this. Likhiye, Mr. So-and-so, Mr. Rajesh Kumar Sinha, learned counsel for the petitioner, seeks permission to withdraw this writ application with liberty to seek his remedy before appropriate court, if any, in accordance with law. Mr. Suman Kumar Jha, learned AC to AG3, for the state has no objection to the same. In the aforementioned circumstance, this writ application is being disposed of with liberty as spread for. Lords, in serial number 17 is similar matter, if my lord. Similar matter, same order. Oblige. Six. 17 आप हैं. डॉक्टर ओम प्रकाश स्वामी. उनका दे दीजिएगा, मिस्टर दीपक कुमार. यस. My lords, in that case, my lords, though he having counter. हो गया 17 में. 17 में लिख दीजिए. This court has been informed by Mr. Deepak Kumar, learned AC to GP4, that FIR has been lost. In the aforesaid view of the matter, this writ application has become infructuous. May be Full stop. disposed of, my lord. Investigation, if any, pending, must be completed within a reasonable time, and a police report be submitted in the court below. कहाँ का मैटर है? सुपौल का. सुपौल का है. The Superintendent of Police Supol shall look into the matter. ठीक है, नीचे कर दिएगा. This application stands disposed of. चलिए. Oblige. Item number 6, Dr. Om Prakash Om. No one appears for the petitioner to place this writ application. Mr. Iqbal, so is present. The application is dismissed as not placed. Item number 7, Bachan Ji Ojha. इसमें भी काउंटर दे दिए हैं हुजूर एफआईआर. FIR लॉन्च हो गया. लिखिए. Counsel for the petitioner as well as Mr. So-and-so for the state are present. Next FIR has already been lost, hence this application has become infructuous. Full stop. It is being disposed of accordingly. Item number 8, Satish Kumar Singh. Yes, state. Eight call हुआ ना? 8. FIR has been lost. Yes, my lord. No one appears for the petitioner. The counsel for the state has informed. You are for? State Election Commission. State. State Election Commission. Election Commission. As counsel for the state, Mr. Suman Kumar Jha informs that FIR has already been lost. Mr. So-and-so Girish Pandey.
Girish Pandey, Planet Council, appears for the Election Commission. State Election Commission. Full stop. This application has become infructuous. Full stop. Next, it is being disposed of accordingly. Item number 9, Santosh Kumar Singh. Petition has been filed for lodge FIR and take action against ASI Punpun, Mr. Rajesh Kumar. क्या हो गया ASI इसमें साहब? जी हुजूर, इसमें ASI साहब के मौजूदगी में हमको पकड़ लिए, पिताजी को बचाने जा रहे थे, ASI पकड़ लिए हमको, जिसके लिए हम अनेक्सर 2 लगाए हैं, TIG साहब को, DIG साहब को, SSP को दिए हैं। ये राजेश कुमार जी हमको पकड़ लिया, उनकी मौजूदगी में एक्यूज पर्सन है सो मेरे पिताजी को मारे हैं और ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। जब उनके यहाँ ये देने गए तो ये कह के वो रिफ्यूज किए कि मेरे बारे में कि मैं मौजूद था, लिखोगे तो हम FIR नहीं लेंगे। तो दूसरा एप्लीकेशन हम दिए हैं वहाँ उनके नहीं मानने पर, और हम बाई एनेक्सर 2 हम DIG साहब को दिए हैं कि इसी तरह से इनका एक्ट है। पेज 13 पर लिखे हैं हुजूर, जब मैं बचाने के लिए बढ़ा तो मुझे पूरी आपका अभी ग्रीवांस क्या रह गया? FIR तो हो चुका है जी हुजूर, ग्रीवांस रह गया कि मिस्टर राजेश कुमार के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपने इसके लिए क्लिक करके दिया हुआ है जी, IG को दिया है जी, एनेक्सर 2 पेज 12 हुजूर। लिखे हर्ड लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड द स्टेट। आज नहीं, नेक्स्ट, इंतजार करते रहिए। लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट आज नहीं, one of its grievances with regard to lodging of the FIR has been redressed, but it is a submission that on his representation contained in Annexure 2, none of the authorities have given any consideration. Next, Mr. Deepak Kumar, learned AC2 GP4, appears for the state. इनको डायरेक्शन दे देते हैं टू कंसीडर Annexure 2। इसमें हुआ क्या है ना, हाँ, कि आफ्टर डेथ ऑफ द फादर ऑफ द पिटिशनर लोग रोड जाम कर दिए। रोड जाम करने में 3 घंटा करीब रोड जाम रहा। पुलिस ऑफिसर को बहुत मेहनत करके हटवाना पड़ा, उसके लिए सेपरेट FIR हो गया। मेरे और खिलाफ उसको लेकर इन लोग को ग्रीवांस है कि सो दरोगा जी जो हैं वो हम लोग पर FIR कर दिए, तो चलिए उन पर भी एक कंप्लेन कर देते हैं। सब क्लोज क्यों नहीं कर देते हैं आप ये आप पेंडिंग रखते हैं हर चीज को। FIR तो इनका हो गया तो तुरंत नहीं, इन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया जी, उसके बारे में he has a right to say his words। जी 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 जी, ये आप जो है इनकी बात गलत है सही है, ये ओरली यहाँ कोर्ट में बोल करके तो नहीं हो पाएगा ना। जी जी, His grievance may be genuine, may not be genuine. जी जी He had represented in this regard. जी, Why your officers have not looked into it? Whether 5 years period is not enough for this? उसके बारे में स्टेटमेंट क्या लिखे? The counsel for the petitioner submits that one of his grievances with regard to lodging of the FIR has been redressed, but it is his submission that on his representation contained in Annexure 2, none of the authorities have given any consideration. Next, Land Council for the state submits that in fact for the alleged occurrence in which the petitioner and the villagers had blocked the road, पैराग्राफ 10 हो काउंटर का, blocked the road, NS 30 near Kothai railway station. After keeping the dead body of the father of the petitioner, one FIR was lodged by police in which the petitioner has been made accused. Full stop. It is for this reason that the petitioner has lodged the complaint against the ASI, namely Rajesh Kumar. Full stop. Next.
be that as it may, this court is of the considered opinion that the version of the petitioner as contained in Annexure 2 to the writ application was required to be considered even for a prima facie opinion by the concerned authorities. Paragraph 4 में हालांकि आया है कि allegation of the petitioner made against the police officer is concocted. This much only. You are saying on affidavit. Where is that? Where is that exercise undertaken by the authorities? जी बस सिर्फ वही आया हुआ है पूरे उसमें, इसलिए उस पे हम आप अगर यही लिख देते कि the complaint of the petitioner has been examined जी matter over and upon examination it has been found to be incorrect, matter would have been otherwise. जी 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 required to be was required to be considered even for a prima facie opinion by the concerned authorities. Concerned authorities. Full stop. In this circumstances, this court directs the Senior Superintendent of Police Patna to look into the grievance of the petitioner as contained next to 2, examine the same and take an appropriate view of the matter based on the materials available. Full stop. For this purpose, if required, the petitioner may also be given an opportunity of hearing. Full stop. Such decision be taken within a period of 3 months from the date of communication of this order. Next, this application stands disposed of. Item number 10, Manish Kumar. Yes. इसमें जो 2 दिन की घटना है, एक 20/5/2017 की और एक 22/5/2017 की। तो 20/5 को इस पिटिशनर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था और 2 दिन के बाद इनकी पत्नी के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था। तो पत्नी वाले एप्लीकेशन पे दोनों को कंसीडर करते हुए कहे हैं कि 20/5 में भी घटना हुई थी और 22/5 को भी घटना हुई थी। तो 22/5 वाले घटना पर इन्होंने FIR रजिस्टर्ड कर लिया है, लेकिन 20/5/2017 का जो एप्लीकेशन दिया था उस पर कुछ नहीं हुआ है। काउंटर में उसमें वो भी है कि नहीं है लिखा हुआ? जी जी, काउंटर में इन्होंने लिखा है। चलिए ठीक है। इनफ्रक्चुअस लिखिए, हैविंग रिगार्ड टू the submission made on behalf of the petitioner that the first information report has already been lodged on the complaint given by the charge sheet of the petitioner on 22/5/2017. 22/5/2017, this application has become infructuous. Next, Mr. Iqbal, learned AC to GP5, has further informed that in fact after investigation police has already submitted a final form. Submitted a police report in the court below. Next, this application stands disposed of. Item number 11, Surendra Kishore Thakur. Yes. Why? You do not have the brief in your hand? No. Why? फाइल कहीं मिसप्लेस हो गया था, बहुत ढूंढा ऐसे बहुत नहीं पाया। ये पहले भी आया था। ना ये सब प्लेस आ रहा है, रजिस्टरिंग FIR। रुक जाइए जरा सा, देखें आपके लिए फाइल नहीं मिल रहा है, मेरे लिए 17 से केस पेंडिंग है। क्लाइंट से भी दैट इज माय कंसर्न। क्लाइंट से क्या होगा जब क्लाइंट का फाइल ही आप नहीं रखे ठीक से, तो क्लाइंट से आपकी क्या मुलाकात होगी बताइए। पिछले डेट को था हुजूर, इस डेट को मिसप्लेस। प्लीज वेट लेट मी सी वेयर इज मिस्टर सुरेंद्र किशोर ठाकुर। कोड नंबर 205 lodge FIR on them.
Who is for the state? My lord, I am for the state. Any instruction? My lord, we did not receive any, the PS did not receive any letter from them, my lord, as stated in the petition. PS did not receive any letter? No, my lord. Para 4 of the counter. His statements are that even Superintendent of Police has written the officer in charge. My lord, I think that is after. My lord, may I have para 4 of the counter affidavit. The report in the matter was called from OC Sadar PS, who has submitted his report on 8/4/18 wide letter dated so and so, disclosing the facts that no any application of Vijay Kumar Roy has been received at the PS on so and so and so and so and so. Come to paragraph 16 of your counter affidavit. My lord. Please read that. Paragraph 16. That the statements made in paragraph 14 of the writ petition needs no comment, since the same are matter of record and the photocopy of the application dated so and so, filed the petitioner, which has been annexed by the petitioner himself and marked as Annexure 6 to the writ petition. It is respectfully submitted that the allegation as made in paragraph are not true. PS case number 2218 for the offence punishable under section 147, 148, 149, 341, 323, 307, 327, 420, 467, 468, 471, 120B IPC has been instituted on the written complaint of the writ petitioner. So the FIR has already been lost? My lord, I am extremely sorry. You should feel more sorry, because you had been in possession of the counter affidavit. My lord. She is not having any brief in her hand, but you should have at least gone through the counter affidavit. Only when this court has devoted this much time, then. My lord, I stand corrected. I am extremely sorry. यही तो आप लोगों को समझाते हैं Sincerely hope it will not. ब्रीफ पढ़ा कीजिए, ऐसे जो है ना खड़ा होकर के हाजिरी बनाने की आदत पड़ जाएगी तो सब अभी यंग एज में समाप्त हो जाएगा. I totally get it, my lord. वकालत I have खत्म no हो justification. जाएगी. Yes, FIR has already been lost. लिखिए, in view of the statements made in paragraph 16. देखिए कोर्ट का क्या पोजीशन है. क्यों केसेस नहीं डिस्पोजल होता है, ये देखिए. this the entire story is one of the I sincerely hope, my lord, I won't contribute to it. how the court is getting assistance. Neither learned counsel for the petitioner nor learned counsel for the state are able to cooperate with the court. तो जब हम इस तरह से चलेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा देर हो जाएगा और पेंडेंसी बढ़ेगी. लिखिए, from the statements made in paragraph 16 of the counter affidavit, it would appear that Sadar PS case number 22 of 2018 for the offences punishable under sections 147, 148, 149, 341, 323, 307, 427,
420, 467, 468, 471 and 120 capital B IPC has already been instituted on the written complaint of the petitioner, and the investigation of the same is going on. Next, in the aforesaid view of the matter, this court directs, कहाँ का matter है? Which district? My lord, it is Directs the Purnia, my lord. Superintendent of Police Purnia to ensure that the investigation of the case is duly completed, if not already over, as more than 5 years have already gone, more than 4 years have already gone. Will stop the case be supervised by him, and a police report be submitted in the learned court below within a reasonable time. Full stop. The investigation must be fair and impartial. Full stop. This application stands disposed of accordingly. 12. Nivedita Nirvita. Yes. No one appears for the petitioner to place this writ application. Mr. Suman Kumar Jha, learned DC 283, appears for the state. This application is dismissed for non-prosecution. 13. Rajiv Kumar Singh. Thank you. Yes, please. On 30/9/2017, this petitioner, my lord, he submitted an application for restitution of an FIR. My lord, that application is annexure 2, my lord, page 16. It has been lost. No, my lord, till date it has not been lost. What they have done, my lord, if I may be permitted to place, my lord, the brief fact, my lord. My lord, my son, your lordship, others, along with others, my lord, they, your lordship, on 29/9/2017, moved, your lordship, at about 8 p.m. to see, my lord, some orchestra, my lord, which was to be performed in Dobhi, my lord, in Gaya. While returning back, my lord, it has been said that one incident took place, and thereafter, my lord, in the midnight, I was informed that my son, my lord, has suffered injury. When I went, your lordship, to the concerned, my lord, the hospital, I was informed that he has, my lord, succumbed to death. Thereafter, my lord, on inquiry, I came to know that the persons along with my son, my lord, they were instrumental, my lord, in killing my son, my lord. And on that day, my lord, on 30/9/2017 itself, the very next day of the incidents, my lord, I submitted an application before the SHO, my lord, for registration of FIR under section 302. But, my lord, till date, my lord, it has not been registered. And, my lord, I have requested your lordship to make available the CDR. Who is Golu Kumar? Golu Kumar is, my lord, one of the person who was, my lord, with my son, my lord, on 29/9/2017. On the basis of his Pardhyan, Yes, my lord. one FIR has been lost. One FIR has been lost, my lord, that is annexure 1, page 11. What happened to that investigation? My lord, in that investigation also, my lord, nothing has happened, my lord, till date, my lord, as per my information, my lord. And my application has also not been written. Yes. लॉर्ड से पहले तो पिटिशनर का जो अनेक्चर लगा होता है पेज 22 पे अनेक्चर 6 जो इनको आरटीआई में इन्होंने मांगा है पहले पिटिशनर का ही डॉक्यूमेंट देख लिया गया. Yes. This is a report given by the Superintendent of Police Gaya. Yes. Senior Superintendent of Police Gaya to the petitioner, Your Lordship. Yes. Para 1, Your Lordship.
आवेदक राज कपूर प्रसाद का आरोप है कि इनके पुत्र राहुल कपूर को दिनांक 29/9/17 को 8 बजे रात्रि में 7 लड़के क्रमशः गोलू कुमार, संदीप कुमार, विशाल कुमार, अनूप कुमार, जितेंद्र चौधरी एंड सो 7 लोग का नाम है हुजूर, और उनकी हत्या कर दी, बुलाकर लेकर उनकी हत्या कर दी। आप एफआईआर करके उसको इन्वेस्टिगेट करते ना। ही वाज गिविंग ए डिफरेंट वर्जन। इसमें इनको साथ लेकर गए हैं सब जगह। ये प्लेस ऑफ ऑकरेंस में भी पहुंचे हैं पिटिशनर। जब उनको बताया गया था, इंफॉर्मेशन मिला था इनके सन बेटे के एक्सीडेंट का, ही रीच टू द प्लेस ऑफ ऑकरेंस, मोटरसाइकिल उठवाए और दूसरे आदमी से घर भेज दिए। उसी में वो भी आया हुआ है, वो भी आया हुआ है। पेज 23 देखा जाए हुजूर, ऑन द सेम डॉक्यूमेंट व्हिच माय फ्रेंड इज रिलाइंग अपॉन। Did you lodge any complaint with the learned CGM if they did not lodge any FIR? Lord, so far that aspect is concerned, Lord, that they have not, Lord. Why I am submitting, Lord, if Lordship may kindly see, Lord. File your complaint in the court below. Lord, it's of 2017. Maybe. Now, why you have not followed the procedure. Your difficulty is that you have moved this court directly under Article 226. Ji. Now, one second, if I may be permitted to place, my Lord. Why I am saying, my Lord, because if Lordship may kindly see, my Lord, my relief number 1C at page 2, my Lord. Yes. This Neeraj Kumar, my Lord, the sub-inspector, he is, my Lord, in association with the said Golu Kumar. My Lord, he is instrumental, my Lord, in not instituting the FIR. So why I am making this submission, these facts will come in course of investigation. Now that fact, if I may be permitted to place, my Lord, page 23, my Lord, which my friend was just referring to. The report of Anumandal Police. Whole difficulty is that you are trying to invite the court to go into the merit of the allegations. An excerpt which you are referring. I'm not on the merit of allegation, my Lord, at present, my Lord. I'm just trying to convince my Lord. I am presently focusing on your complaint. Ji. That you had lodged a written complaint with the police station, Ji. giving a different version of the story. Ji. You said that so and so were instrumental in killing of my son. My Lord. Prima facie, yes, FIR should have been registered, and because two different versions are coming, one was that he died in an accident, another was that no, he has been killed. So from both the angles, the case would have been investigated after registering of FIR. Lord, Even the investigation could have taken place from his own angle. This is what, my Lord, Lalita Kumari case also. But you did not follow the procedure. No, why I am. You should have filed application under 156(3). My Lord, why I am insisting, my Lord, if I may be permitted for one moment, my Lord, if your Lordship may kindly see, my Lord, page 23, my Lord. Paragraph 2. Page 23, my Lord, it's a part of. Yes. My Lord, report dated 24/11/2017. Paragraph 2, my Lord. Yes. Second, sub-paragraph, paragraph 22, paragraph 2, my Lord. पुलिस अवर निरीक्षक नीरज कुमार से पूछताछ की गई तो वे बताया कि घटना के दिन सभी लड़के थाना आए थे। उनका बयान वीडियोग्राफी के माध्यम से मोबाइल से अरुण कुमार पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष शेरघाटी के द्वारा कराया गया था। वर्तमान में मैं उस वीडियोग्राफी खोजने का प्रयास किया लेकिन उपलब्ध नहीं हो सका। My Lord, that is the reason, my Lord, I am submitting before my Lord that this Mr. Neeraj Kumar, my Lord, instrumental, my Lord, and he is bent upon not to, my Lord, register the FIR. My Lord, once, my Lord, Your Lordship is aware, my Lord, the judgment of Lalita Kumari versus State of UP, my Lord, reported, my Lord, in 2013 for PLJR. My Lord, the Supreme Court section 504. That once. I remember 2014 2 SCC page 1. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आप लोग पीएलजीआर से क्यों साइड करते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आती। Forget this. I got the point. ये सब यंग लॉयर्स को सिखाना पड़ता था, पहले हम लोगों को सिखाया गया था बार में by the seniors. कभी-कभी when you are going to cite a judgment of the Honorable Supreme Court, it should be, my Lord, either take AI the or citations, the official citations. ऑफिशियल साइटेशंस उस समय भी एससीआर को लोग मानते थे जी, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, फिर एससीसी एआईआर अब चल रहा है, तो अब देखते हैं पीएलजीआर साइट होता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के लिए। हुजूर, कभी-कभी
हड़बड़ी में खोलने 2014 to SCC page 1. 14(2) applies for. I am giving you liberty, Mr. Rajiv Kumar. File an application. 17 matter, my lord. Incidents took place, my lord. That and is this true, gentleman- but the Supreme Court judgment is there. Sakri Vasu case and others. Their lordship say that discourage direct writ applications for lodging of FIR. My lord, agreed, my lord, agreed, my lord. The observation which my lordship is giving, my lord. But your lordship, that varies from case to case, my lord. Here, my lord, it is an admitted fact that the such SHO, my lord, It this is your. Neeraj Kumar, अब अगर वकील रॉन्ग एडवाइस कर करके डायरेक्ट रिट फाइल करा दे रहे हैं तो हम क्या करें इसमें? आप देख ही रहे हैं कोर्ट का बर्डन क्या हो रहा है. And almost all the cases, I tell you, take it from me, out of 100, in at least 95 cases you will find that had the lawyers given the right advice to their client at the relevant time, these writ applications would not have been filed. my lord, And then the aggrieved person would have got the relief in the. Submits that he had made representation to the SSP also, still the FIR was not lost. Next, on perusal of the writ application, however, it appears that the petitioner has moved this court directly without exhausting his remedy under section 156(3) CRPC in the Court of Learned Chief Judicial Magistrate Gaya. Next, in the case of Sakri Vasu versus State of UP, reported in 2008 to SCC 409, their lordships have held in paragraph so and so as under. Next, considering that this writ application has been filed directly before this court for lodging of the FIR, this court would not entertain the same in view of the aforesaid observations of the Honorable Supreme Court. Full stop. Liberty is, however, granted to the petitioner to seek his remedy by filing an appropriate application in the learned court below. Full stop. Mr. Deepak Kumar, learned AC to GP4, appeals for this. This application stands disposed of accordingly. I seek permission to mention, my lord. Just now my case, my lord, serial number 12 got dismissed for default, my lord. Wait. Instruction of my. Wait, don't intervene when the matter is going on. 14. FIR register हो गया है. ये कब तक? But investigation is not completed. ठीक है. It has not been. लिखिए. And counsel for the state has informed that FIR has been lodged in this case.
Will stop. Next, land counsel for the petitioner submits that despite lodging of the FIR, for more than 5 years, the investigation has been kept pending. Next, in the aforesaid view of the matter, this court directs the Superintendent of Police Chhapra, Saran, Chhapra within bracket respond number 5, to look into the grievance of the petitioner, examine the reason for delay in conclusion of investigation, and in case it is found that the IO is not taking interest in completion of investigation of the case, this IO should be changed immediately and appropriate instructions be issued to ensure completion of investigation within a reasonable period. Full stop. Next. This application stands disposed of accordingly. 15. Virendra Singh. Yes. जो कर रहा हूँ ऑर्डर कंप्लाई हो गया. Dismissed as withdrawn. 16. Shivshankar Sharma. No one appears for the petitioner to place this writ application. Mr. Irshad. Mr. Irshad, learned AC to SC1 appears for the state. This application is dismissed for non-prosecution. 17 has already been disposed of. 18. Ashok Kumar. No one appears for the petitioner. Mr. So and so, learned AC to GP 5. 5 appears for the state. Next. In the circumstances stated above, this application is dismissed for non-prosecution. 19. Mohammad Sahnawaz Ali. Yes. माय लॉर्ड, ये दरभंगा जिले के अलीनगर ब्लॉक का, जहाँ पे किसान फसल क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत कुछ लोगों ने धांधली तरीके से पैसा उठा लिया. कुछ लोगों ने तो आप PIL लेकर के आए क्या? नहीं मैम, नहीं सर. Who are you? आई एम पिटिशनर अकलू मुखिया. आप हैं कौन? क्या आप किस कैपेसिटी में आए हैं यहाँ? उसी ग्राम पंचायत के हम वासी. प्रवासी हैं जी. तो जाइए FIR लॉन्च कीजिए. तो नहीं लॉन्च हो रहा है ना FIR क्यों? सर. तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं ले रहे हैं वहाँ के SHO, ना ही BDO SDO. तो आप जाइए वहाँ, अगर SHO नहीं ले रहे हैं तो आगे जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कीजिए आप. Earlier also moved this honorable court, my lordship. Annexure 1, page 14, my lordship. Can you see the order? Annexure 1, page 14. Only PIL move किया था. अच्छा PIL मूव किया. Permitted to be withdrawn. Pursue your remedy in accordance with law. Why are you moving directly? लिखिए. It appears on perusal of the writ application that the petitioner has moved this court directly under Article 226 of the Constitution of India for lodging of the FIR. Next. It is the grievance of the petitioner that he had made complaint with regard to misappropriation of government money and loss to the state exchequer with the block development officer, Ali Nagar, as well as block agriculture office and district agriculture officer. No, with the concerned police station against the block development officer Ali Nagar, block agriculture officer and the district agriculture officer, who are said to be responsible for the same. Full stop. Next.
in the entire writ application, there is no averment that the petitioner had followed the procedures required to be followed in the matter of lodging of the FIR. Please stop. There is no statement that the complaint was brought to the notice of the SP under section 154(3) or any application was filed in the court of learned Chief Judicial Magistrate Darbhanga under 156(3) CRPC. Next, in such circumstance, a writ application directly filed before this court for lodging of the FIR cannot be entertained. Full stop. It is dismissed accordingly. Full stop. Petitioner is at liberty to seek his remedy in accordance. Item number 20. Nirmal Kumar Sinha. Lodging FIR, no steps taken. No step taken. No one appears for the petitioner. Mr. Ruchikar Jha, learned AC2, SC 8 appears for the state. Please stop. It is pointed out that the petitioner has not followed the procedure for lodging of the FIR, and there is no statement to that effect in the writ application. Next, be that as it may, since no one is putting appearance for the petitioner, this writ application is dismissed for non-prosecution. 21. Ramesh Kumar Singh. Yes, Mr. Agarwal, just check whether procedure has been followed or not. Worship, to register the FIR and to restrain the respondents, private respondents. हो गया है FIR. Instruction नहीं है. छोड़िए. No one appears for the petitioner to place this writ application. Mr. Iqbal, learned AC2 GP 5 appears for the state. This application is dismissed for non-prosecution. 22. Jagjit Rosar. Sir, my senior is on his way, so please pass over. You are here. Your senior is engaged. Take it as an opportunity to argue the matter. Sir, actually, sir, the file is having with him. So why is having with him? Why did not you carry the file? You know, not carrying the file in the courtroom is a discourtesy to the court. Yeah, when did you join the practice? Sir, 3 months before. Only 3 months. Yes. ठीक है. I'll give you an opportunity, but ask your senior that give me the file. Okay, sir. Sorry. लेके आइए फाइल लेके आइए. Okay, sir, he is on his way, sir. लेके आइए फाइल. Okay. He is coming. He is on way. Yes, sir. तो इधर आइए आप. This is petitioner side. Sorry, yes. Sir. And learn the language of the court. Not okay या. This is not the way. आप जूनियर को ट्रेन नहीं कर रहे हैं. ब्रीफ क्यों नहीं दिया इनको कोर्ट में भेजने के पहले? Lordship, he directly came from. I was arguing in another court. You may be arguing, but your junior should carry the brief. Yes, Lordship. And इनको लैंग्वेज भी थोड़ा सिखाइए कोर्ट का. Of course, Lord. ठीक है. हाँ. खाली वकालत करने में मतलब अपने काम में मत रह जाइए. नहीं. जूनियर्स को भी थोड़ा ट्रेन कीजिए. Yes, Lordship. बोलिए. Lordship, in this case, police is in complete connivance with the opposition. What happened? Because the petitioner was beaten, everything was done. The medical report is over there. But her file was not taken. And the petitioner was arrested in connection with a case. No, Lordship. Then there was a case and counter case. Case was taken, but my counter case was not taken. Although आपने भी तो follow नहीं किया है procedure. नहीं, procedure follow किया है. Follow किया है. SP के. Where is your application under 156(3)? 156(3). That has not been. That has not been followed. So follow that. Lordship, I have filed a complaint before after this case, Lordship. After writing to the SP, I filed an application before. Appeal Radhikar before. That is not the remedy. You are looking for lodging of FIR. They are not even admitting my. Please try to understand. If the police is not lodging FIR, and what remedy you have? Yes, what Lord. remedy you have? 156. Please tell me what remedy you have. Lordship, may see the 156(3), Lordship. You could have
submitted an application before the SP under 154(3)? Lordship may see the counter affidavit, the manner in which they are against me, Lordship. They are they are writing in counter affidavit that it is a civil dispute, and they are taking the affidavit of my Gotia, not that will be examined by the learned magistrate. That is why you were required to go under 156(3). You are calling upon this court under Article 226 to examine everything. When you have a regular court available. Lordship, here is a case in which, Lordship, my petitioner has been beaten and she was treated at PMCH. Can't that be taken care by the learned magistrate? Yes, Lordship. But her FIR is not being taken, and in fact, the grievance of the petitioner is that her FIR has not been registered. Lordship, and she was beaten. Page 16 of my writ petition, Lordship. She was beaten by respondent, Lordship. Respondents. Private respondents. Yes, Lordship. By private respondents. Please stop. Next, on perusal of the writ application, however, it appears that the petitioner has not followed the procedure and has directly moved this court for lodging of the FIR. Please stop. In the case of Sakri Basu so and so, the Honorable Supreme Court has observed in paragraph so and so as under. Next, in the aforesaid view of the matter, this court would not entertain this writ application. Full stop. It is being disposed of with liberty to the petitioner to file an appropriate application if so advised in the learned court below. Full stop. Application stands disposed of accordingly. 23. Chandrakant. Briefly, Lordship, for the registration of the FIR, Lordship, on the application of the petition. Same position is there with you also. Lordship, Annexure 3. You have also not lodged a. Lordship, my application, Lordship, not FIR, but 107 proceeding was initiated, Lordship. Okay. Although they have taken cognizance. You wanted it to be registered as FIR. Yes, Lordship. Yes. Yes. So, if you wanted it to be registered as FIR, you should have followed the procedure. I should have followed, but my submission is, Lordship, on the my application for registration of the FIR, Lordship, Annexure 1, Annexure 3 was initiated, Lordship. Yes. 107 proceeding was initiated. Yes. Instead of lodging FIR, Lordship. That is your grievance, so you should have followed the procedure. I should have filed, Lordship. लिखिए, Third Land Counsel for the petitioner and the state. And counsel for the petitioner submits that on the basis of his written complaint, instead of lodging of a first information report, police recommended for initiation of a proceeding under section 107 CRPC. Police stop. His grievance is that police should have registered it as a first information report. Next, this court has gone through the statements made in the writ application. Full stop. There is no averment that the petitioner had followed the procedures required to be followed for this purpose. Full stop. Since the petitioner has moved this court directly for lodging of the FIR, keeping in view the judgment of the Honorable Supreme Court in the case of Sakri Basu so and so, this court would not entertain this writ application. Full stop. Next, it is being disposed of with liberty to the petitioner to seek his remedy before appropriate court in appropriate jurisdiction. Application stands disposed of accordingly. 24. Prem Prakash Poddar.
Yes, you are for the petitioner. फॉर प्राइवेट इधर आ जाइए ना. नोटिस बिना नोटिस के अपील किए थे, कॉपी भी हमको नहीं मिली है, इसलिए कुछ कहने में असमर्थ है। ऑर्डर तो ठीक ही लग रहा है, इम्प्यून ऑर्डर. इंक्वायरी हैज नॉट प्रोसीडेड इन. नहीं, इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी का रिपोर्ट आ गया, उसके बाद नहीं 202 में इंक्वायरी प्रोसीड किया कि नहीं आफ्टर दिस ऑर्डर? उसके बाद ये हाई कोर्ट आ गई सीधा। यहाँ से कोई इंट्रीम ऑर्डर तो है नहीं, कोई एंट्री ऑर्डर नहीं, फिर भी वहाँ कार्रवाई रुकी हुई है. ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। लिखिए, नो वन appears on behalf of the petitioner to place this writ application. Mr. Suman Kumar Jha, learned AC to AG 3, appears for the state. Mr. Mahendra Thakur, learned counsel, appears for OP number 2. Full stop. This application is dismissed for non-prosecution. 25. Indu Bhushan. Yes, sir. पुराने cases में nobody is showing interest. Same order dismissed for non-prosecution. 26. Indu Shekhar Dwivedi. FIR has been lost. Lost. No one appears for the petitioner. Mr. Iqbal has informed that in this case FIR has already lost. Hence this application has become infructuous. Next, in the aforesaid view of the matter, this application is being disposed of. 27. Pramod Misra. Yes. Passed for few cases. For few cases. I am for petitioner. Yes. Above 80 years old. You are looking for protection. Yes. 79 years में क्या जरूरत पड़ी कोर्ट आने की? वो भी 4 साल और हो गया तो 80 you are 82 years now. क्या हो गया आपको? फैमिली डिस्प्यूट है? लड़के की मौत के बाद ही उनकी पत्नी पुत्रवधू है और उनके परिवार के लोग से डर है। पुत्रवधू से झगड़ा तो आपको निपटाना पड़ेगा, मेडिएशन में ले जाइए कहीं, वहाँ मेडिएशन में ले जाकर के ये सब फैमिली डिस्प्यूट को सुलझाइए. इसमें रीट क्या इशू करें बताइए? क्या प्रोटेक्शन आपको 82 ईयर्स ओल्ड आप हैं, क्या प्रोटेक्शन आपको दें? लिखिए, on perusal of the materials available on the record, this court finds that the petitioner and his daughter-in-law as also other family members are fighting over a property dispute. Full stop. Such issues may be properly adjudicated only before a competent civil court. Full stop. This writ application as framed cannot be entertained. Full stop. It is dismissed accordingly. 29. Sudha Chandra. Yes. It was filed in the year 2018.
Yes. With respect, my lord, to the seeking a police protection for cultivation of his lands, my lord. कहाँ अभी सब में चले आ जाते हैं सुरेंद्र बाबू? In the background, my lord. यही सब काम हाई कोर्ट का रह गया कि आप लोग जमीन की लड़ाई लड़िए और यहाँ से हम पुलिस फोर्स पेश नहीं, करें। उसमें कोई बोनाफाइड डिस्प्यूट नहीं है हुजूर। ठीक है, जाइए It's ना all वहीं। recorded in my name. If there will be any law and order issue, make appropriate representation before the competent authorities. देखिए, this writ application as framed cannot be entertained. Full stop. In case there is any law and order issue, comma, the petitioner may bring it to the notice of the competent authority within local jurisdiction. Full stop. This application stands disposed of accordingly. बहुत सारा पिटीशन दे हुजूर, किसी पे कोई Private कार्रवाई dispute नहीं। ऑलरेडी इतना इनका राइट कार्य है, है तो कि ऑब्जर्वेशन की जरूरत भी नहीं। कम से कम ये तो ऑलरेडी राइट है इनका, ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं। दो बार 44 हुजूर, दोनों बार वकील साहब लोगों को हाँ जी डील करने के लिए कई बार जो है ना जजेस को कुछ वैसे भी बोल देना पड़ता है, इससे कि ये खुश होकर के कम से कम हटे तो सामने से। नहीं, कम से कम हुजूर पिटीशन फाइल कर तो उस पर एक्ट अपॉन करें। 30 नहीं हुजूर, एक लाइन का। क्लाइंट ये तो नहीं कहेगा कि देखिए वकील साहब क्या फाइल कराया। जी जी। नहीं हुजूर, पिटीशन और जज साहब चाह रहे हैं कि चलिए छोटा मोटा कुछ दे करके इनको हटावे। एक्ट अपॉन करें हुजूर। हो गया एक्ट अपॉन प्राइवेट पार्टीज के डिस्प्यूट में हम। यस, Kindly pass over for 1 or 2 cases. Kindly pass over for 1 or 2. where is your brief? You have? Very good. Read the prayer. Ma'am is coming, my lordship. Ma'am is coming. Read the paragraph. Read paragraph 1. बुला के लाइए उनको जल्दी से। 31 वीरेंद्र कुमार। Yes, my lord. Pendency of the charge has been submitted, my lord, and my lord in counter affidavit, my lord. But my lord, the grievance of the petitioner, my lord. My lord, not still, my lord, has. What is your grievance? My grievance is, my lord, to proper investigate, my lord, Obra PS case. You are not satisfied with the charge sheet. No, my lord, because my lord, the death of the deceased, my lord, very suspicious. My lord, I have annexed the. You are accused of the case. My husband is accused, my lord. Your husband is accused. My lord, and other villagers also, my lord. तो आप उसके लिए appropriate application फाइल कीजिए वहाँ। यहाँ तो आप का प्रेयर ही कुछ ऐसा था कि जो अब infructuous हो गया। पैराग्राफ नंबर 2 में हुजूर 1 हुजूर उसमें तो ये स्पेसिफिक। देखिए, in this case the prayer of the writ petitioner has become infructuous inasmuch as the investigation of the case is complete and police is said to have submitted a charge sheet in the court below. Next, this writ application is disposed of with liberty to the petitioner to seek her remedy, comma, as may be advised to her in the competent court in appropriate jurisdiction. वही फाइल कीजिए एप्लीकेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ चाहते हैं तो वही कीजिए। 32 धनंजय कुमार। काउंटर के लिए कहा गया था एसपी साहब को। काउंटर आ गया है। क्या है काउंटर को जो आ गया है इसको आज बार पासवर्ड कर दिया जाएगा। काउंटर भी हम दे देते हैं एसपी का भी, उसका भी, सबका शौक आ जाएगा। तो हमको 1 सप्ताह का समय दे दिया, हम जवाब दे देंगे। 3 को काउंटर देंगे, तीनों का हम जवाब देंगे। मारपीट किए हमको जेल में हुजूर, आपने एसपी साहब को डायरेक्शन दिया था कि एसपी को कि आप करके काउंटर आ गया, सबका काउंटर आ गया। लिस्ट ऑन 16th जनवरी। In the meantime, काउंटर एफिडेविट दे दीजिए। आज तक को दिए रहता, अब दिए नहीं रहते, नहीं कर रहे थे, नहीं घुस रहे थे तो कहीं ले लीजिए जल्दी से, केस कॉल होने जा रहा है। अब हम केस कैसे ले ले? अभी घुस रहे थे आप तो 1 घंटा पहले। आप लोग ये ट्रेंड मत शुरू कीजिए। नहीं हुजूर, हमसे ये गलती कभी जिंदगी में। कंप्लेंट भी आता है कि कॉपी लेने में आप लोग ना हुजूर, हम अभी भी लगता है हुजूर घूस है दिन का क्लर्क काजी लेना लीजिए तो हम लोग डांट सुनने लगे। नया ट्रेंड शुरू हो रहा है फिर। 33 अमरनाथ झा। 16 कर दीजिए। In the meantime, Lord Counsel for the state shall serve copy of the counter affidavit on the Lord Counsel for the petitioner, and Lord Counsel for the petitioner may file his rejoinder if any. Yes. Proper investigation. Proper investigation will be covered by this order. 99. 8वें महीने का तो FIR हो। अब यही ट्रेंड हो गया है। एकदम FIR हुआ तुरंत रिट।
चलिए, कोविड में बहुत दिन तक वकील लोग जो है बंद रहे, तो अब क्लाइंट आ रहा है तो कुछ तो फाइलिंग हो रही। लिखिए, मिस्टर सो एंड सो लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड मिस्टर इकबाल both agree that this writ application may be disposed of in terms of common order dated so and so past instance. Same order कर दीजिए। 34 राघव प्रसाद। Yes. Seeking protection. No one appears for the petitioner, however, in the nature of the reliefs read in the writ application, comma, with the consent of Mr. Iqbal, learned AC to EP5, this writ application is being disposed of in terms of order dated 9/9/2022, passed in CRWGC number so and so and other analogous cases. बाकी उसको रिप्रोड्यूस कर दिएगा। 35 विमलेश कुमार झा। Yes, Mr. Jha. Not urgent, proper investigation. He is looking for investigation by CBI or CID. क्या, what is the matter? काउंटर दिया है क्या आपने? नहीं। Even this matter has already been investigated. File your counter affidavit. His son has been murdered and he is saying that you are not conducting proper investigation. लिखिए, no one appears for the petitioner. However, keeping in view the relief spread in this writ application, this court directs the state to file a comprehensive counter affidavit. Police stop the Superintendent of Police Madhepura within bracket respond number 7 shall himself supervise the case and updated information be provided in the counter affidavit. List after 4 weeks. After 4 weeks. One item. आप ये बताइए, आप इतना बिजी लॉयर हैं, why don't you train your junior? उस बिल्डिंग से यहाँ आने में बहुत नहीं तो हम उसी लिए कर रहे हैं आपको ना, जूनियर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए अब आप लोगों को। 30 Yes. Lord, बोलिए। this petitioner has filed this case for protection of life and 27 लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्या हुआ है आपको? 30. Case was filed in 2018. Yes, Lordship. 4 years have gone thereafter. Yes, I have taken instruction from my client Lordship yesterday. He said ki madam, now we have started 3-4 more companies, that is NBC 24 news channel and Velmart Healthcare Private Limited also, Your Lordship, the news channel is also doing some investigation with regard to the corruption, Your Lordship, and till today they are getting threatening. Right now the phone number provided by my client, Your Lordship, when I have tried to contact him, करप्शन किसका आप एग्जामिन कर रहे हैं?
जो कंपनी जैसे कि प्रॉक्टर गैम्बल हुआ या दवा का कंपनी हुआ, ओरिजिनल नाम से आप सीएनजी क्या कहते हैं उसको, सीएनएफ जो लेते हैं और उसको फिर डुप्लीकेट मार्केट में सप्लाई हो रहा है, तो उस तरह का हम काम करते हैं और बहुत सारे कंपनीज का करते हैं, ब्रांडेड कंपनीज का। बहुत सारी जगह रेड भी हुआ और हमने एफआईआर भी, एक एफआईआर हमने इस पिटीशन की नोट किया हुआ है हुजूर। That is your business. You are taking work from different companies to find out कि हाँ हमारे लोकल एरिया में कोई डुप्लीकेट माल बिक रहा है नहीं बिक रहा है, तो नॉर्मल बिजनेस है आपका, इसमें क्या प्रोटेक्शन चाहिए? नहीं, उसके बाद हमारे ऊपर फिर हमला हुआ, जो हम जो रिपोर्ट देते हैं वो कहाँ है? रीट में तो कहीं नहीं है कुछ हमला जो हुआ आपको। नहीं, एफआईआर है, पेज 5 पे देखा जाए, एक एफआईआर तो मैंने मेंशन किया हुआ है उस समय का, पेज 5 पैराग्राफ एफ जो है, एसके पुरी पीएस केस नंबर 297 of 17. Yes, what happened in this case? Your Lordship is still pending. Investigation has not been done. एसके पुरी पीएस केस नंबर 72 of 2018 still pending. और उसके बाद हुजूर न्यूज़ 24 NBC 24 न्यूज़ चैनल जो हमने जो ओपन किया है, और ये वेलमेंट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी इनका देख लीजिए क्या थ्रेट परसेप्शन है, एग्जामिन कर लीजिए। And Your Lordship, the one more thing, I have representation filed before the SHO. SHO has given report. On the basis of that report, SP has directed कि इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। Where is that? Your Lordship, annexer सब लगा हुआ है, मुझे बता देते हैं। Your Lordship, ये annexer 2 हो गया, जो SHO कृष्णापुरी। Your Lordship, annexer 2 देखा जाए, Annexer 2 देखा, Annexer 4 भी आपका देखा मैंने। Annexer 3 भी। Where is the letter of the Superintendent of Police? हाँ, और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक वही तो कह रहे हैं, where is that letter कि प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? If he is of the opinion that protection मिलना चाहिए, then it should have been taken to the then when I have contacted before the office, the Home Secretary, Lordship, the Mr. चैतन्य कुमार प्रसाद, he said कि मैटर आपका हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, जब तक कोई डिस्पोजल नहीं होगा हम लोग कोई एक्शन ठीक है, तो डिस्पोजल कर देते हैं पहले। ये तो गलत, अगर ऐसा बोला उन्होंने तो गलत बोला। हाई कोर्ट में पेंडिंग होने से क्यों नहीं कंसीडर करें? कल ही मैंने उनसे इंस्ट्रक्शन लिया। Unless there is any interim order restraining him from taking decision. Lordship, the Annexer 3 is the relevant, Lordship. इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। लिखे, heard land counsel for the petitioner and Mr. Suman Kumar Jha, learned AC to AG3 for the state. Next, petitioner in the present case is seeking a direction to the respondent authorities to provide him police protection, as according to him the life of the petitioner is in danger. Next, and counsel for the petitioner submits that even as this writ application was filed on or about 5/9/2018, the fact remains that over the period the danger has only increased. Full stop. In support of her contention, the learned counsel has drawn attention of this court towards the report of the Deputy Superintendent of Police, within bracket law and order, addressed to the Senior Superintendent of Police Patna, contained in memo number 6324 dated 25/12/2017. जी. Full stop. Next, Lord Counsel submits that because the petitioner is engaged, petitioner has been instrumental in getting arrested some of the mafias involved in illegal trade of liquor and spurious drugs and medicines, there after his life. Next, Land Counsel for the state submits that in such circumstance, appropriate decision may only be taken by the district level security committee. Next, having regard to the facts and circumstances of the case, this court directs the Senior Superintendent of Police Patna
to look into Annexure 3 to the writ application, which is the letter of the DYSP within bracket law and order, comma, get the threat perception of the petitioner examined at his end, and in case it is found to be genuine, comma, appropriate and immediate step be taken to send the case of the petitioner for consideration to the district level security committee. Full stop. Next, if any such recommendation is sent to the district level security committee, the same will be considered expeditiously and all endeavors be made to consider the same and take a decision thereon within a period of 2 months from the date of receipt of the recommendation. This application stands disposed of accordingly. Item number 27. 36. Pass out. 27. जी pass out for few cases पास ओवर हुआ है. Yes. जी पास ओवर हुआ for few cases. नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हुआ है. क्या हुआ है 27 में? 27 में कोई ऑर्डर नहीं है. ऑल राइट. हमारे जूनियर में पास आउट फॉर few cases करवाए थे. अच्छा, सीरियल नंबर 27. बोलिए. For a direction or to give protection to the life and property of the petitioner. The fact is, my lord, that on the land of the petitioner, my lord, some anti-social elements, my lord, start to create, my lord, disturbance. Matter came before, even before this honorable court. After intervention of this honorable court, my lord, one case was registered. सब दीजिए, वहीं दीजिए, वहीं that will be examined. इतना हुजूर कह दिया जाए, हम वहाँ ठीक करेंगे. लिखिए, the nature of the relief spread in this writ application, the petitioner, this court grants liberty to the petitioner to submit a detailed representation supported by adequate materials before the Superintendent of Police Khagadiya within bracket respond number 6, showing his threat perception. Please stop. If any such representation is submitted by the petitioner, the respond number 6 shall consider the same, and in case it is found that the threat perception of the petitioner is genuine, comma, the same will be considered and appropriate recommendation thereon shall be made to the district level security committee. Next, the district level security committee is expected to, and the district level security committee shall take an appropriate decision thereon within a period of 2 months from the date of receipt of the recommendations, comma, if any. Full stop. This application stands disposed of accordingly. पर्सनल सिक्योरिटी की इसमें नहीं, प्रॉपर्टी का इसमें. प्रॉपर्टी से मुझे मतलब नहीं, अगर इनको कोई थ्रेट परसेप्शन है लाइफ का, जी जी, so that will be examined. That is even otherwise your duty to examine. जी जी, वो तो है ही. If anybody comes to you that I have threat to my life, yes, ये कौन सा है सीरियल? 30 में फिक्स है वो. उसी का 27 कॉल किया था इन्होंने. Item number 59, one fixed matter at 12:30. Hello. Yes. Lord, counter affidavit we've received. And Lord, if my Lord has time, we like to. When did you receive counter affidavit? Today only. Yes, my Lord, I've gone through the counter affidavit. What do you want? Lord, Lord, if my Lord wants, Mr. Luthra was not available today. He was busy in the Supreme Court. He sent me, and I'm prepared to argue on this matter, my Lord. You are prepared to argue the matter? Yes, my Lord. What, before my learned friend, with his permission also, he moved for anticipatory bail, which was rejected. Never anticipatory bail. Regular bail, my lord, sorry. Regular bail, which was rejected by this court. Now, by this writ application, he is seeking quashing of the FIR. Now, charge sheet submitted, cognizance taken,
This is my objection. My lord, if I may, my lord, in this matter, my lord, I like to prove wrongful confinement by the police. My lord, demand of huge amount of money. And my lord, for 2 days, my lord, this is a very unique case where for 2 days they contend. The You are immigration here tomorrow. My lord, I'm here tomorrow. Tomorrow. We'll hear you tomorrow. Please, my lord. We'll hear you tomorrow. I am giving the order rejecting his bail, where My lord, all my lord, the my- facts my have lord, been my lord, enumerated and he my was the bail- counsel. My bail has been rejected No on issue. one sole ground No where issue, it says section because- 37 has been attracted. My lord, 37 has been attracted to me. That's the I will only- hear you. Please don't worry about it. I will hear you. Today I am finding that we have only few minutes left. Please, my lord. And this matter will require some more time. Please, my lord. We'll hear tomorrow. Please, my lord. My lord, This my order only- may kindly be kept on record for my lord's साढ़े approval. 12 बजे. My lord, my only contention, my lord, there was a CCTV camera. Detailed learned counsel for the parties are present. List is matter tomorrow at 12:30 p.m. My lord, one small request, my lord, there was a CCTV camera which had come on We'll record. take a view after hearing all the concerned parties. My lord, if there was a provision to watch the CCTV camera, my lord, that'll be advantage to the correct. This court has not to go through the CCTV camera. That will be a matter of evidence which will be looked into. Please, my lord. Now देखते हैं whether what kind of case you are making out, it will be clear only after hearing you. Please, my lord. लाइए कॉल कीजिए. रिविजन वाला 36 मनोज कुमार. For proper investigation, Lordship. Para 6 of writ mechanism. Yes. Allegation against his own brother, sister. This. लिखिए, it seems to be a case of लिखिए, it seems that this case has been registered only on 18/6/2022. No one appears for the petitioner to place this writ application. Considering the kind of relief spread in this writ application, this court directs the Senior Superintendent of Police Muzaffarpur, within bracket, respond number 4, to conduct a free, fair and impartial investigation of the case and submit a report accordingly. Application stands disposed of accordingly. 37 रविंद्र कुमार. Although, my lord, the prayer is for fair investigation, but my lord, the habit of the respondent authority is that only on the basis of confession. My prayer is, my lord, the confession, my lord, recorded by the police, Lord, may be examined before the London magistrate. And further, my lord, paragraph 9 of my writ petition may be seen. But Whether I had investigation is complete? No. Not complete. It is still going on. You are looking for proper investigation of the case. And my lord, further prayer, my lord, to record the statement under section 164 of the persons, Lord, whose confession has been recorded in the case. Lord, my apprehension that they have not disclosed the fact. The grievance of the petitioner in this writ application is paragraph 9 of the that the investigating agency is not conducting proper investigation of civil lines PS case number 553 of 2021, registered under section so and so, para 1. Next line, counsel for the petitioner submits that despite the request made to the investigating officer of the case to get the statement of some of the witnesses recorded under section 164 CRPC, he is not taking any step. Full stop. Next line, counsel for the state submits that the case is still under paragraph 9 also, investigation. make and listen. Next, in the aforesaid view of the matter, this court is of the considered opinion. On the same fashion, my lord, earlier, they have implicated. Lord, when this honorable court directed to file counter affidavit, they exonerated me. And again, in another case, my lord, only in same fashion,
On the और basis में लिख of दीजिएगा in paragraph 9 of the writ application the petitioner has made the following statements. Quote कर दीजिए para 9. Next, Land Council for the state submits that the case is still under investigation. Next, in the aforesaid view of the matter, this court directs the senior superintendent of police Gaya, within bracket respond number 5, to personally supervise this case and ensure free, fair and proper investigation of the case in question. Full stop. The SSP Gaya shall also look into the statement of the petitioner made in paragraph 9 of the writ application and take a view thereon. Next, in case the IO of the case is not acting properly, the said IO shall be changed immediately. Next, the petitioner may also file an application in the learned court below in terms of the judgment of this court in the case of so and so versus so and so for monitoring of the investigation. And in case any such application is filed, the same will be considered keeping in view the directions of this court as contained in order dated so and so, passed in so and so. This application stands disposed of. Just a minute, please. Next. 1 PM cases. वो वाला जो बैच केस है उसको कॉल कीजिए तो. The batch of remission cases. एक बजे वाला नहीं होगा. होगा. Item number 55. बताइए क्या करना है इसमें. इसका सब आगे नहीं ना. Lawyers are not here. 55 में नाम क्या है? नहीं है. हम विजय कुमार सिंह. नेक्स्ट पुकारिए. एक मिनट रुकिए अभी. कहाँ से कहाँ तक है? 55 से 55.12 55 24 56 के जस्ट ऊपर. हम सनी देवल, कृष्णा सिंह. There are altogether 25 cases. Yes, my lord. सनी देवल, कृष्णा सिंह and Birbal Chaudhary. Where is your notes of argument? Yes. Notes of arguments we have not prepared, लेकिन 2-2 मिनट में हम खत्म कर देंगे. हुजूर का जजमेंट है उसमें ऑलरेडी. पहले से ठीक हम है, मिस कर गए. इसीलिए ईमानदारी की बात है कि हम भूल गए. अभी ये कह रहे हैं हुजूर, तुमको याद पड़ रहा है कि आपने कहा था. हम एक पन्ना का दे देंगे. हम कल दे देंगे. आप इतने व्यस्त वकील नहीं हुजूर, वैसा कुछ नहीं. संभव नहीं है, याद रखना. व्यस्त हैं तो हम जिम्मेवारी से भाग जाएं क्या? हुजूर, हमारा ये रिटन आर्गुमेंट है इस केस में. सब में नहीं आया है जी, मेरे में हम तैयार कर दिए. आपके कौन कौन से हैं सीरियल नंबर? जी, हमारा होगा 8 के सीरियल नंबर 55 और 55. In all the 8 cases you are filing. My lord. 8 plus 3. 8 plus 3. 3 case. 15. Give the list of those cases. My lord. 15.3, 15.7 and 15.19. ये है हमारा लिस्ट. Give your written notes. जी, ये हमारा रिटन नोट्स है हुजूर. In all the 11 cases. जी, और ये हम हुजूर जितना जजमेंट हम रिलाई कर रहे हैं सारे जजमेंट का हम कराते हैं. तो all 11 cases का बस वही है? जी, यही है सफिशिएंट है. नहीं, all 11 cases का आपको बोला था ना कि सबका तो अलग अलग होगा फैक्ट ना. नहीं, फैक्ट तो हुजूर केवल डिसाइड करना है हुजूर को कि 433 और 433A. बस यही एक क्वेश्चन मात्र डिसाइड करना है. जितना भी मैक्सिमम केसेस जो रिजेक्ट किया गया है वो 433A के अंतर्गत कवर्ड हो रहा है और उसको रिजेक्ट किया गया है 2002 के सर्कुलर 4 के आलोक में. मतलब आपका कहना है कि आप सबके केसेस में जो कन्विक्शन है जी, कन्विक्शन इज ऑफ द ईयर प्रायर टू 2002. 2000 आफ्टर 2002, prior to 2007 or after year in which 2002 policy was implemented. My lord.
वो जजमेंट हमारा वाला दिए जिसमें कंसिडर किया था। जी 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 जी, हुजूर का जजमेंट भी है जी, हुजूर का जजमेंट भी है और बाकी सारा हाँ, जजमेंट जिसमें हम रिलाई किया था जिस पर। जी जी जी, ये हुजूर का जजमेंट है ऊपर में। यस, सुरेंद्र महतो, इसमें हुजूर डिसाइड किए थे, उसको हुजूर पहले स्टेट डिसाइड किया कि हम एसएलपी में जाएंगे और एसएलपी में फाइल गई वहाँ दिल्ली हुजूर, और वहाँ से वो लौट के चला आया कि इसमें फाइल कीजिएगा तो आपका एसएलपी रिजेक्ट हो जाएगा। तब हुजूर रिमिशन बोर्ड ने बैठ के हुजूर के जजमेंट को रिव्यू कर दिया है, वो हम दे दिए हैं। रिव्यू कर दिया? जी जी, पूरा रिव्यू कर दिया है, मतलब हमने दे दिया है हुजूर। हमारे जजमेंट को रिव्यू जी जी, रिमिशन बोर्ड ने रिव्यू कर दिया है। With जी जी, हम reference to one judgment of a coordinate bench, Honorable Mr. Justice Parsarthi, whether that 2002 notification came in force in 2018, he said कि yes. जी 18 में इन लोगों ने कहा कि ये रूल एप्लीकेबल होगा, नोटिस रिमिशन बोर्ड ने लिया. Yes. My lord, in my lord's judgment has said, consider, अब they are annexing a judgment passed by Honorable just a coordinate bench of this court, where उन्होंने कहा कि जब आया 2 में तब से ही वो लागू है. नहीं, वो कब का जजमेंट है? वो सब्सिक्वेंटली काउंटर में दिए हैं अभी लोग. काउंटर में दिए हैं अभी। डिफिकल्टी क्या हो रही है ना शर्मा जी, प्रॉपर असिस्टेंस नहीं हो रहा है कोर्ट को कि अगर कोऑर्डिनेट बेंच का जजमेंट है और उसके अगेंस्ट आप बहस कर रहे हैं दूसरे कोर्ट पे, तो पहले का जजमेंट आप नहीं दिखा रहे। ये अभी हमने देखा है उन सब केसेस में भी, वो बालू वाले केसेस में, कि जो जजमेंट यहाँ पहले का था हमारा and which was challenged in the Honorable Supreme Court, the challenge had failed. That my judgment was not cited at the bar, and then a completely contradictory judgment was obtained. नहीं, उस जजमेंट में भी, उसमें भी हुजूर, उस जजमेंट में भी हुजूर के जजमेंट का आया है डिफरेंस। ऐसा कैसे होगा? जी जी, आया है जी। अगर ये जजमेंट उसमें आया है जी, इसका मतलब दिस वाज साइटेड। जी जी, साइट किया गया है जी। तो कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे होगा तब? तो That had Honorable Justice Parsarthi हाँ, judgment. My lord's judgment was considered in that case. It was a part of an lecture. Part of Subject an to lecture. correction. Subject to correction. तब तो in that case this will be referred to the division bench. It should have been referred to the division bench if it was the position. About that, my case, that point is not. My case is nothing to do with that. What notification. Mr. Vijay Kumar is saying, if that is correct, then so there will be In my case, contradictory judgments. I have nothing to do with that notification. आपके- Either it is आपके applicable judgment- from आप 2 or आपके it केस is. की बात नहीं कर रहे ना, पहले तो Their cases. 11 केस जो इनका है जी, उसकी बात कर रहे हैं ना, वो दिखाइए जरा मुझे। This judgment was given effect to or not? जी, This judgment was given effect to or not? हुजूर के उसी को रिव्यू कर दिए हैं, कर दिया हुजूर रिमिशन बोर्ड। जी जी नहीं, आप बोल रहे हैं रिव्यू कर दिया। जी, जी। Means क्या दिस जजमेंट जी, उसमें हुजूर जजमेंट जो है रिमिशन बोर्ड जो रिव्यू किया है वो हमने उसमें लगा दिया है हुजूर। My lord, the judgment of coordinate bench is of August 22,
Whereas my lord's judgment is of 19 February 21. 19 February 21. 19th February 21. जी. And even thereafter, another judgment of this court is of 25/10/21. My lord's judgment, another judgment. Another judgment. But the coordinate based judgment is 5th of August 22. And there this judgment was cited. देख लेते हैं. It is not clear. मुझको तो नहीं लगता है कि was cited. वही तो Mr. Vijay Kumar Singh is saying that yes, वही एक मिनट. it was cited. How this judgment may be reviewed by the board? जी जी देखा जाए ना. Even if subsequently, suppose a conflicting judgment or जी जी. two judgments come before the state remission board, saying two different things. If no appeal has preferred against this judgment, रिमिशन बोर्ड का जो रिव्यू जो किए हैं वो हम लगा दिए हैं इसमें. कहाँ है? जी पंडित जी जरा दीजिएगा, हम एक मिनट दिया जाए, हम बता देते हैं. लगा दिए. So फिर it will be, if that would be the position, then it will be a case of contempt. जी कंटेम्प्ट का क्लियर कट कंटेम्प्ट का केस है. If this judgment has not been appealed against, जी. and it has not been set aside by the Honorable Supreme Court, जी. और उसके बाद हुजूर इसमें देखा जाए रिव्यू कर दिया है कंप्लीट. जी वही है. There is no reference of my lord's order. In coordinate based judgment, there is no reference of my lord's judgment earlier given. नहीं है. नहीं है. कैसे लिख रहे हैं कोई आदमी स्टेटमेंट दे रहा है? That judgment, my lord, kindly see in CRWJ. एक मिनट. जी. ये हुजूर उसी को देख लिया जाए, उसमें पूरा 190 जो है हमारा हुजूर सनी देओल वाला, उसमें जो काउंटर है उसमें काइंडली देख लीजिए. पढ़ते हैं. हम एक मिनट जरा शर्मा जी. 236/21. कितना मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड है बोर्ड का हुजूर. हाई कोर्ट ने कह दिया कि 302 में केवल कन्विक्शन होगा, वो कहता है कि 364 भी था, जिसको अपीलेट कोर्ट ने 364 को नहीं माना, 302. तो हमने डील किया है उसमें. हमारे सनी देओल में पहले हुजूर का एक ऑर्डर है, उस समय इन्होंने प्ली लिया कि 4 साल का इनको मिला नहीं, इसलिए कि ट्रायल कोर्ट ने रिपोर्ट नहीं भेजा. माय लॉर्ड डायरेक्टेड देम व्हाट इज दिस इन केस ऑफ अदर, since you are giving remission of that period, counting the period about the co-accused of the same judgment, only because presiding officer has not sent that. So my lord director, they count it and send his matter to the remission board. Now they say कि इनका 364A और था, और सिमिलरली सिचुएटेड कहता है कि 13 साल के बच्चे की हत्या हुई, और कारू को दूसरे दिन मीटिंग किया, उसमें कारू महतो को 8 साल के बच्चे की हत्या में उसको रिमिशन दे दिया. तो दोनों ऑर्डर लगा दिया हमने. एक ही बोर्ड है. हमने डील किया इसमें भी. एक ही बोर्ड है. सुरेंद्र महतो वाले केस में भी जी हमने डील किया है बहुत डिटेल में कि इनका कितना डिस्क्रिमिनेटरी है अप्रोच. नहीं, सबसे बड़ी बात है हुजूर कि जिसमें कन्विक्शन नहीं हुआ अपीलेट कोर्ट है, ओरिजिनल कोर्ट की बात करते हैं. कल इसको फर्दर सुनते हैं. कल इसको फर्दर सुनते हैं. ये फाइल दे दीजिएगा. CRWJC नंबर 190 में हुजूर स्टेट के काउंटर में कोऑर्डिनेट बेंच वाला ऑर्डर लगा हुआ है. कोऑर्डिनेट बेंच का जो वही बता रहे हैं हुजूर. सनी देओल केस 190 में काउंटर एफिडेविट में लगा है नेक्स्टर भी 190 में. और भी कुछ केस में हुजूर. अच्छा, कहीं एक ही जगह देखेंगे ना भाई. And cursory I have seen there is no reference of my lord's earlier order of February 21. Means it was not cited. Not cited. तो conflicting तो ऑर्डर आप लोग करवा दे रहे हैं. अगर साइट कीजिएगा तब तो फिर वहां पर कोऑर्डिनेट बेंच में साइट कीजिएगा तो बताएंगे कि ठीक है, इवन इफ देयर इज एनी conflicting opinion or a different opinion. There, my lord, the duty of the petitioner was not only to show the earlier judgment. Rather, the estate also should have said
that my lord is giving a order contrary to स्टेट से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेकार है, ठीक है? तब तो वेलफेयर स्टेट इसको नहीं कहा जाए ना। स्टेट से कुछ भी एक्सपेक्ट करना जो है वो बेकार है, वो अपने आप को परेशान करने वाली जैसी बात है, क्योंकि द मोमेंट यू थिंक ऑफ एनी असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट you start having some sort of tension in your mind. क्या असिस्टेंस है आप बताइए? तो बिल एप्लीकेशन सुनने में क्या असिस्टेंस है? एक लाइन उदाहरण देते हैं, हमारा कन्विक्शन 302 में हुआ अपीलेट कोर्ट में, हाई कोर्ट से, अब ये रिजेक्ट कर रहे हैं ये कह के कि 364A का केस था। इसी केस में हमने देखा है where the honorable सुप्रीम कोर्ट said कि साहब देयर आर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेज, ये है पहले से प्री प्लान नहीं है, कॉन्स्पिरेसी नहीं है। सुरेंद्र महतो वाले केस में जी वहां इन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया ये बोल करके कि ये प्लान्ड मर्डर, जी जी प्री प्लान मर्डर। दे डिड नॉट इवन लुक इनटू द फाइंडिंग्स रिकॉर्डेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जी क्या कीजिएगा? इन माय केस दे आर नॉट लुकिंग टू द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द हाई कोर्ट। इस तरह के ऑफिसर्स बैठ के जाएंगे सोच करके कि हमको किसी हालत में हाई कोर्ट की बात नहीं माननी। जी जो उसको पढ़ा जाएगा उसमें क्लियर कट यही है कि हाई कोर्ट के बात को नहीं मानते हुए 2002 से अप्लीकेबल कर दिए हैं, जबकि ठीक है, दैट आई विल सी इफ दैट वुड बी द पोजीशन। जी यही पोजीशन I'll take a view tomorrow. माय I will take उसी a में view. कहते हैं कि हीनस क्राइम लाइक डकैती, रेप, मेरे केस में न डकैती है न रेप है, और 364 कह दिया कि ए था, जबकि कन्विक्शन 302 में हाई कोर्ट ने किया मेरे केस में, सनी देओल केस में। जो भी है, मिनिमम जुडिशियल डिसिप्लिन रिक्वायर्स कि अगर आप हमारा जजमेंट है इट हैज नॉट बीन इंटरफेयर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देन these authorities have to comply with that. Yes. And who are they to review it? It is the apex court which can review. That would be contemptuous. जी. That would be contemptuous. But I am withholding my opinion. I will take this view if required tomorrow. My lord, kindly time. And who is for the state in these cases? My lord, kindly fix a time for these Sanu, cases. you are in these cases. You will have to prepare yourself very well. I will. Otherwise, ask your senior to be here. No, I'll assist, my lord. And seek instruction My lord. from your this remission board. My lord. What they are saying, you are hearing all these things. My lord. If this is correct, that the judgment of this court was not appealed against, and it has not been interfered with, then I would ask you a straight way. The question would be whether or not you have complied with that judgment. If you have not complied with that judgment, despite there being no interference by the Honorable Supreme Court, My lord. then all your officers will be required to be present here, and I will frame charges against them. My lord. ना हुजूर को हम सो So कर देंगे। I am telling you only for this reason, that you have to prepare yourself today. I shall. Rather on other point also that they are discriminating between two. एक आदमी 8 साल के बच्ची के मर्डर का एक्यूज्ड है, उसको दे दिया, हमको कह दिया कि 13 साल के बच्चे का है, 364A था, जबकि हाई कोर्ट ने 302 में कन्विक्ट किया। डिस्क्रिमिनेशन को भी देखिए जरा, उसका उम्र है कहता है। सब समझ रहे हैं ना? My lord. कन्विक्शन नहीं हुआ 364A में, और रेमिशन बोर्ड आपका कह रहा है कि 364A में है, इसलिए हम। My lord. In an appropriate case, it may be held to be a malified exercise of power. And when he came before your lordship earlier, on that ground which I have just now stated, my lord directed them, count that period. Now they have not taken this plea that time. While not sending my case to the remission board, they have not taken I this remember, plea. is it a case from Nalanda? Patna का case There है was one case from Nalanda in which the jail superintendent had not filled up the remission card of that prisoner for about 2 years. I appear in that case. You had appeared. हुजूर पूरे बिहार में किसी भी प्रिजनर को हुजूर स्पेशल रिमिशन नहीं मिल रहा है। पूरे बिहार की स्थिति है कि किसी को स्पेशल रिमिशन नहीं मिल रहा है, जबकि प्रोविजन है कि स्पेशल रिमिशन दिया जाएगा, जितना साधारण रिमिशन मिलेगा उतना ही स्पेशल रिमिशन देना। For various works, जी
190 में हम अर्लियर हुजूर का जो जजमेंट है 15/3/21 का, उसमें दूसरा पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया ही नहीं कि हिनास ऑफेंस है 2002 का नोटिफिकेशन, उसमें दूसरी बात थी। एक दूसरे को रिमिशन में भेज दिया, मेरा काउंट नहीं किया, ये कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने उस पीरियड को नहीं दिया, फांसी से कन्वर्ट हुआ था लाइफ में, इसलिए हमने उसको काउंट नहीं किया इसका पीरियड। हुजूर ने कहा कि व्हाट इज दिस, फांसी से कन्वर्ट हो गया तो हम इसलिए नहीं करेंगे। नहीं, वो 4 साल का हुजूर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट नहीं जेल को भेजा, तो 4 साल को काउंटे नहीं किया मेरा। इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज द बेंट ऑफ देयर माइंड। द वर्क व्हिच दे हैव बीन असाइंड दैट रिक्वायर्स सम रिस्पांसिबिलिटी एंड पॉजिटिव एक्शन, बट पॉजिटिविटी के बजाय इट समवेयर इट इज लॉस्ट इन द नेगेटिविटी। My lord, may kindly be pleased to fix some time in this. Tomorrow 12:30. Obliged. उसको पहले कॉल कर दीजिएगा। My lord, some of my colleagues, one of the colleagues would argue because Instruction, if required, I'm not here tomorrow. Take. Some of my colleague will argue the matter because I'm not. Whosoever will argue, My lord, if your colleague will argue, he should not say that I am not. I'll pass on everything to my colleague. I don't know. You have to. My lord. You have to take note of it. My lord. Obliged. Or you may convey the learned advocate general also that this is the position, and the require the state to answer all these issues. If necessary, you can ask one of your responsible officers from the state who is competent and is well versed with the facts of the case to be present here to assist the state council. One of the member of the remission board, 5 members are there. Or ask one of the members, requisition one of the members that come here, these issues are arising for consideration and the court will require an answer. My lord. I will. My lord. But take it seriously. राम प्रवेश कुमार। कौन सा 1 बजे का है? जी 1 बजे। Yes. बायोडाटेटेड लोग सब। What relief you are looking for? Interim relief? रिपोर्ट टाइम चाहिए था उधर, थोड़ा सा टाइम दे दिया था उधर, बाई मिस्टेक हम कन्वे नहीं कर पाए थे, माय लॉर्ड का ऑर्डर। भाई खान साहब, ये क्या हो रहा है आपका? ये सब लगातार ये सिचुएशन आ रहा है, क्यों? गलती हो जा रही है, जरा से इसको अकोमोडेट कर। नहीं, ये आफ्टर 2 months if you will say कि हमने कन्वे नहीं किया है, then I am very sorry for this, my lord. I am very extremely sorry. You have already said I am very sorry in previous occasions also. Thursday को रख दिया जाए सर, Thursday को मंगा लेते हैं। नहीं, this amounts to stopping the court from rendering justice. Thursday को रख दिया जाए। 2 months back I had granted you time. मिस्टेक हो गया तो बाई मिस्टेक आज हम फाइल देख रहे हैं तो वो ऑर्डर नहीं कम्युनिकेट। तो आप अगर इस तरह से मिस्टेक करते रहेंगे तो हम क्या करेंगे बताइए? हम आपसे कितना दोस्ती रखें बताइए? तो दूर के सामने I will impose cost upon the state. I will impose cost upon the state. Thursday को रख दिया जाए। I cannot remain oblivious of all these things. After 2 months the state council will say कि साहब हम भूल गए इंस्ट्रक्शन लेना। हमने इसीलिए टाइम दिया था। थर्सडे को रख दिया जाए, हम पढ़ लिया उधर पूरा ऑर्डर। आई एम वेरी सॉरी No, I am not happy with this situation. This is third occasion that you are saying. लिखिए। देखिए, I am trying to restrain myself from giving any observations against you. It becomes very difficult. Showing sympathy in these circumstances may have a very adverse effect on the whole system. 2 महीना अगर स्टेट काउंसिल आप इंस्ट्रक्शन सीख नहीं करेंगे, रिपोर्ट नहीं देंगे, and that too in this kind of matter, who has to give the report? SP and superintendent of कैसे आप रिपोर्ट मैनेज कर लेंगे तुरंत 2 दिन में? और एक मेडिकल बोर्ड का भी लेना है। कैसे आप कर लेंगे 2 दिन में? I fail to understand. Go and talk to the SP and all others and then come back to me. तो कल हम कवर करते हैं। आप बात करके मुझे बताइए
कि कब आप रिपोर्ट देंगे? मुझे डिफिकल्टी हो रही है इन एडजस्टिंग विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. I am talking. I will talk. And this is happening with you every time. This is third occasion, I remember. पहले सिवान वाले केस में भी आपने ही किया था. देखिए मैं भूलता नहीं हूँ थोड़ा, ठीक है, जल्दी. ऐसा नहीं है, भूल सकते हैं. आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, बट नॉर्मली आई रिमेम्बर. सिवान वाले केस में भी यही हुआ था ना. आपके जूनियर ने टाइम लिया था, मिस्टर इरशाद ने. लाइए, बताइए मुझे पूछ कर. 285. Yes. Case may not, the petitioner has been convicted for the offence under section 4. You are in jail. I am in jail. For how long you are in jail? I have been for about 18 months. By now. 18 months. 18 months. And maximum क्या है period? 3.5 years for 420/34 minutes. लिखिए. Informant is a party. Informant is the party. That is, they are the government officials. अच्छा, they are government. लिखिए, this application will be heard. Admit नहीं हुआ है ना? अभी admit नहीं. All for the LCR. Next, counsel for the petitioner submits that the petitioner has remained in jail for 18 months as against the maximum sentence of 3.5 years imposed upon him. In that view of the matter, let the petitioner be released on bail on furnishing 55,000. Fine be had. There is no fine. Placed under heading for hearing with the LCR on its turn. Yes. 286. Vyas Kumar Mishra. Yes, please, your lordship. My Yes. here is for setting aside the order. Yeah, what are you looking for? For release of the vehicle, my lord. Release of the vehicle under the Excise Act. Under the excise. Go by the division bench judgment. Why are you coming in single judge? लिखे. This writ application has been filed seeking release of the vehicle which has been seized in connection with para 1. Next, division bench judgment का है citation आपके पास. Next, counsel for the state I will provide. has pointed out that in such matters the honorable division bench of this court has issued directions, one of which may be found in CWGP number so and so. Will stop. Counsel for the state therefore submits that the petitioner may seek his remedy before the competent authority in the light of the judgment of the honorable division bench. Next, in the aforesaid view of the matter, this writ application is being disposed of with liberty to the petitioner to seek release of the vehicle in question in the light of the judgment of the honorable division bench, as has been pointed out on behalf of the state. We'll stop. This application stands disposed of. Finally, I may be permitted to make submission, my lord. No confiscation proceeding has been initiated, my lord. Neither any notice has been given under There Prevention is no Money problem. Laundering Act, my lord. Have you read the division bench judgment? Difficulty is that you are not aware of the division bench judgment. Everything is provided there. 287. Yes. Narayan Sinha. Yes, Mr. Sinha, you are in jail. For how long? 6 महीना 10 दिन. पैरा 18 and 99. 6 महीना 10 दिन. नोटिस हुआ है इनको? नहीं, first time. लिखिए, issue notice to OP number 2 by both modes, requisites for which must be filed 2 weeks preemptory, all for the LCR. Next, land counsel for the petitioner submits that the petitioner has remained in jail over 6 months as against the maximum sentence of 3 years. 3 years. 3 years awarded to him under section so and so. In that view of the matter, this court directs provisional release of the petitioner on bail on furnishing bail bond 25,000. List after service of LCR.
288, Raju Kumar. Yes. My lord, additional session judge Kaimur passed the order, my lord, but 25 August 2022, my lord. What relief you are looking for? Interim IU and relief. doctor have not examined, my lord. Opinions? What interim relief you are looking for? My lord, only relief I directed to my lord. IO and doctor for examine of the case, my lord, necessary, my lord. Yes, state seek instruction. लिखिए. Let the state file counter affidavit after seeking instruction from the public prosecutor, district public prosecutor, as the case may be. Next, call for a report from the learned trial court. List on receipt thereof after 3 weeks. My lord, वहाँ पर डिफेंस के लिए चल रहा है. चलने दीजिए. रिपोर्ट हमने मंगाया है, आएगा तो उसके बाद देखेंगे. जी अच्छा. जो serial 34 To withdraw serial number 12 that got dismissed by the court. You want to withdraw? I am for petitioner. Mr. Manoj Kumar. Mr. Manoj Kumar. On instruction of my senior Mrs. Nirvikar, my lord. On instruction from Ms. So and so, learned senior advocate seeks permission to withdraw this application. उसको पहले dismiss for default किया था, उसको हटा दीजिए. Is withdrawing this application. serial 34 में कॉमन ऑर्डर के लिए था फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. एक 2 मिनट क्या हुआ है क्या? नॉन अपीयरेंस हो गया. हो गया. नोट हुआ है तो इनका प्रेजेंस दे दीजिए. सीरियल 34 रिलीफ तो आपको दे ही दिया है. हाँ, आपका tomorrow you are here. Then how much time will you take? Lord,
counsel for the petitioner seeks permission to withdraw this application. Permission is granted. Application is dismissed. Serial number. Prayer, my lord, for 294, my lord. 294, same order. Jaipuriya. Mr. Ansuman Jaipuriyar. Yes. 314 for withdrawal. Dhananjay Kumar Gupta. 314. 14 same order. इसमें लिख दीजिएगा although why it is listed under petition Limitation था लॉर्ड. लिखिए although the matter is listed under heading for orders within bracket on petitions but Mr. Sardanand Misra you are Mr. Dhananjay Kumar Gupta Lord counsel for the petitioner seeks permission to withdraw this application as a whole. List of permission is granted. Application is dismissed as withdrawn. Lordship, The revision application is dismissed as withdrawn. Lordship, serial 293. Yes, ma'am. Yes. APL opening week, Lordships. This is 2017 matters. Just one Normally, I do not grant any adjournment. First week. Let it be called out. We'll see what is there. Normally, I do not grant any adjournment unless a special case is made out. Yes. In this case, my lord, the SP will send the report, my lord, by Wednesday, my lord. Okay. As paid by Mr. Khan, Unit SC1 lists this matter Thursday. On Thursday under the same heading, maintaining its position. I mentioned, my lord, mention a case criminal WGC 13/52/2022. FIR crossing. This is not the time to mention the matter. Why are you mentioning at 2:15? ऊपर में केस था इसलिए. So that way I cannot break the discipline. Na? It cannot be a whole day affair. Anybody can come anytime and mention. Sorry. Yes. One fixed matter, 58. Ajit Kumar. Yes. Yes. My Lord, this is a case which has been filed for the quashing of the FIR, my Lord, billing number 217/2015, my Lord. Yes. My Lord, the primary allegation, my Lord, that the bullet of one of the police, my Lord, of the team had caused the death of one individual, my Lord. And that bullet has been fired in the performance of the public duties, my Lord. The petitioner is one of the SAP Jawan, my Lord, who had gone at the place of occurrence, my Lord, for maintaining the law and order situation which has arisen, my Lord, out of, my Lord, the activities relating to the gambling. And there were reported disturbances at that particular point of time, my Lord. So last 3 days, the police has been visiting, led by, my Lord, different person, my Lord. In my case, my Lord, Subhas Yadav, my Lord, he was leading the team of SAP Jawan, my Lord. Before coming to, my Lord, the FIR, I'm just giving you the overview, my Lord, what had happened. My Lord, the area is a notified Nexlite area, my Lord. Yes. And, my Lord, till 2019, my Lord, 2021, my Lord. Yes. This has remained the notified Nexlite area, and therefore the SAP Jawan, heavily armed with weapons, my Lord, are there to, my Lord, control the activities over there. That day also, my Lord, at 10:30, the police team led by a place called Hatia Gachi, my Lord, and in that place, my Lord, they were engaged in a gambling activities, and when the police had intervened, they started resisting, my Lord. And consequently, my Lord,
they started fleeing, my lord. They retreated from that particular place. And what happened, my lord? 2 kilometers they have covered the distance from the date of occurrence. And, my lord, the Bolero gadi in which they were traveling, it was pelted, my lord. This is the admitted fact of the it was broken, my lord. It was also admitted fact, my lord, that the crowd over there, my lord, the police particularly, my lord, they have gone from differently, my lord. I mean, the group has dispersed, my lord, one police. Yes. And petitioner, my lord, was surrounded by hooligans, my lord, unruly crowd. It is admitted fact, my lord. Because, my lord, the every police personnel, in order to save their lives, went in a different directions, my lord. And he was surrounded in the dead end of a particular wall, my lord. And therefore, my lord, his entire body is, my lord, soaked with the muds. And it was also come into the supervision report and all, my lord. And that was the circumstances, my lord, because the joint investigation report filed by DYSP and subsequently SP, my lord, had clearly stated only one allegation, that there is excessive force. There is one excessive force he should have exercised extreme restraint while dealing with the crowd, my lord. That is the only allegation, incriminating allegations, my lord. And there is nothing on the prosecution, my lord, the story which made me culpable of section 304, my lord. Now, my lord, in this backdrop, my lord, my humble submission before my lordship, that there are two legal questions which are emerging for my lordship consideration, that whether this criminal FIR, my lord, is liable to be quashed under section 482, my lord. This is the one question, my lord. And the second, my lord, whether there is enough prosecutable materials in the charge sheet, my lord, which made me culpable of what we have did, my lord. We are on the trial, not what I am. We are on the trial, what I did, my lord. So my doing, my lord, is related to maintaining the law and order situations, my lord. This is the fact, my lord. Now, my lord, I kindly explain the facts, my lord, with respect to the FIR, my lord. There are two FIR, my lord. One FIR by the police, my lord, the team which had visited, and the another FIR, my lord, filed by the informant, my lord, the relatives of the victims, my lord. In this case, my lord, surprisingly, both are victims, my lord. And this is the cross FIR, my lord. Kindly appreciate, my lord, the cross FIR. This is the cross FIR, my lord. Where is that? It is, my lord, first page number 17, my lord. I am aggrieved by page number 17, my lord. This is the FIR against you. Against me, my lord. Yes. And the kindly, I mean, coming to this, my lord, first dealing with this FIR. Thereafter, I will come to now, my lord, page number 22, my lord. The FIR filed by the police. Yes. Kindly see this, my lord. I will start from 16. Yes. This is 22, my lord. Yes. This is under section. Complaint is at page 25. Yes, my lord. This is by Subhas Yadav. Yes, my lord. Yes. This is 24, my lord. Yes. 24. 24 is the formal FIR. Allegation part is on page 25. Yes, my lord. Yes, my lord. Now you see the section, my lord. Yes. 147, Yes. 148, my lord. Yes. 149, 341, Yes. 323, 325, 307, 353, 337, 160, 290, 332, and 427, my lord. And here, my lord, 307 is also there, my lord. Kindly, my lord, can I read, my lord, the contents of this complaint, my lord? Yes, yes. My lord, it is in Hindi, my lord. Yes. सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय सिरदल्ला थाना नवादा महाशय सबने निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं पुलिस आरक्षी सुभाष यादव सिरदल्ला थाना रिजर्व वाले के जवान सो एंड सो मिलॉट ली दीज आर द डिटेल्स दिनांक
दिनांक 11/11/2015 दिन बुधवार को शाम 10:30 बजे रात्रि गश्ती थाना से प्रस्थान किया। रात्रि गश्ती करते हुए हम लोग सशस्त्र बल के साथ लौंद पहुंचा तो देखा कि हटिया गाछी के आसपास रोड के किनारे काफी संख्या में लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के क्रम में वे लोग आपस में काफी वाद विवाद और हमला कर रहे थे। हम लोग जब रोड के किनारे जुआ खेल रहे हैं तो लोगों से बाहर में इस प्रकार का जुआ खेलने से मना किया तो उन्होंने नाजायज मजमा बनाकर हल्ला और गाली गलौज करते हुए हम लोगों को घेर लिया और हम लोगों के साथ हाथापाई करने लगा। जब हम लोग पीछे हटे तो वो लोगों ने रोड़े पत्थर चलाने लगे और जिससे मैं गश्ती गाड़ी बोलेरो के पीछे शीशा टूट गया। भीड़ के द्वारा रोड़ा चलाने के कारण हम लोग पीछे हट गए और सभी 150 और 200 लोग पुलिस वाले मारो करते हुए गाली गलौज करते हुए हम लोगों को घेर लिया और हम लोगों को हथियार छीनने मारपीट करने के उद्देश्य से टूट पड़े। उग्र भीड़ को देखते हुए सैप संख्या 435 आशीष कुमार ठाकुर के साथ जान बचाने के लिए भागे और शेष जवान अपनी जान बचाकर दूसरी ओर भागे। दोनों जान बचाने हेतु भीड़ के लौंद के करीब 2 किलोमीटर आगे आ गए और बाद में पता पाया कि सैफ बाएं के भागने के क्रम में एक सैफ जवान घनश्याम कुमार को पटिशनर मिलो द्वारा पकड़ लिया गया और उस भीड़ में शामिल होने के द्वारा उनके साथ मारपीट करते हुए हथियार छीनने लगे। हथियार छीनने के बचाने के लिए गलती से घनश्याम कुमार द्वारा 3 राउंड गोली चलाई गई जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। गोली चलाने के पश्चात भीड़ यत्र तत्र भागने लगी और सैफ जवान घनश्याम कुमार अपनी जान गंवाकर भागे और कुछ देर के बाद हमारे पास आए। आप बीती घटना संबंध में बताए और आश्रित लोगों के द्वारा नाजायज मजमा बनाकर पुलिस पर हमला करना, गाली गलौज करते हुए हथियार छीनने का प्रयास करना यह एक सक्षम अपराध है। अतः निवेदन है कि मिलॉर्ड द FIR शुड बी देन। Yes. My lord, these are the actual story which was given by the police, my lord. Now come to, my lord, the page number 19, my lord. This is the FIR filed by the relatives of the informant, my lord. Yes, my lord. This is, my lord, my Nagendra Kumar Mehta. First, my lord, the FIR, you kindly see, my lord, the section, my lord. It is 302, 307, 379, 34, 27 and the provision of SC/ST, my lord. Now, my lord, the contents of the FIR. महाशय मैं नागेंद्र कुमार मेहता पिता श्री प्राय चौधरी लौन थाना सिरदरा जिला बिहार का निवासी हूँ। दिनांक 11/11/2015 को रात्रि को 12 बजे मैं अपने घर से अपने भतीजा राकेश कुमार पप्पू चौधरी और श्री राजेंद्र कुमार को खोजने निकला और चमोथा हाट पर कुछ बच्चा दिवाली के शुभ अवसर पर परंपरा के अनुसार एज पर द ट्रेडिशन खेल रहे थे। उसी दरमियान सैप पुलिस बल ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और गाली गलौज एवं मारपीट करते हुए मेरे पैकेट से 1200 रुपये ले लिया, जिसे मैं चेहरा से पहचान सकता हूं। साथ ही सहायक अपर निरीक्षक सुभाष यादव को भी पहचान सकता हूं जो सैप बल के साथ थे। पैसा छीनने के बाद मैं चिल्लाने लगा और सारे बच्चे जो खेल रहे थे भागने लगे। चूंकि सारे पुलिस बल शराब पिए हुए थे और गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें भागने के दरमियान में मेरा भतीजा राकेश चौधरी को गोली लग गई। मिलॉर्ड, जो घटना के स्थल पर ही मृत्यु हो गई और शेष 2 बच्चा उपेंद्र चौधरी पिता मुद्रिका चौधरी लौन बाजार लगभग 2 वर्ष गोरेलाल चौधरी पिता छोटेलाल चौधरी को उम्र 21 वर्ष गोली चल गई, जो वर्तमान में इलाज हेतु निजी अस्पताल में पटना में भर्ती हैं। सारे पुलिस पदाधिकारी एवं सैप जवानों को जो रात्रि गश्ती में आए उसकी जानकारी स्थानीय जिला परिषद के सदस्य शंभू प्रसाद जी ने थाना जाकर आरक्षी नगरा और श्री बर्मन आरक्षी अधीक्षक को दे दिया गया। सो मिलॉर्ड, दिस इज द कंटेंट्स ऑफ FIR। मिलॉर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मिलॉर्ड इन दिस केस that, my lord, there is a similarities. The similarity is that there is incidents, my lord, between the police
and the people or individual. Why Subhash Jadhav has lost 2 FIRs? There is one more FIR by Subhash Jadhav. No, my lord, the only one FIR. 216 or 15? No, my lord, 16 is a relative of the deceased, my lord. My lord, 16 by the police. 16 by the police, 17 is a relative of the informant. 17 is by relative. Yes, my lord. Yes. So, my lord, there are similarities in the both FIR, my lord. The one similarity is that there is incidents between the police, my lord, on Now, 11th. whether these 2 cases have been investigated? Investigated, my lord. I will come to that, my lord. Yes. There was investigation, but, my lord, in 217 of 2015, my lord, the charge sheet has been filed. However, the other FIR, my lord, 217, 17. 16, yes, 16 it has not been filed, my lord. The police... Charge sheet has been filed in which? 16 or... 17, my lord. 16 it has not been filed, my lord, though it was investigated jointly. My lord. Yes. So, my lord, now, my lord, the contents are there. My humble submission is, my lord, there are similarities. You have challenged that charge sheet? My lord, I have challenged, my lord. I have moved an IA, and my lordship had allowed that IA. And my lord, the informant has filed a reply also, my lord, and that is also on the record. So I will come to that later part, my lord. Firstly, I will be concluding, my lord, that no order taking cognizance has been passed to them. No, my lord. All right. As per my information, there is no, my lord. All right. So, my lord, there is a similarity. There is similarities, my lord. The similarities, my lord, there is admitted fact that there is incidents between the police and the local people. Yes. The second, my lord, there has been injuries also, my lord. There has been injuries, my lord. These are the similarities, my lord. And the other similarities, my lord, both complainant, my lord, had admittedly concluded that the people around there were engaged in gambling acts, my lord. One is saying, as per the tradition, and they are saying, my lord, that illegally they are doing, my lord, the gambling acts. But these are the similarities, my lord. Essential facts remain the same, my lord, in the both FIR, except, my lord, there are embellishment, there are colored versions, that the police started, my lord, this snatching the money and all these things, my lord. Really, it is for anybody to conclude, my lord. Everybody knows, my lord, what had happened over there, my lord. Now, my lord, kindly see the state had, my lord, filed a affidavit, my lord. Yes. In which the state had annexed the entire charge sheet and diary, my lord. Yes. Yes, my lord. I will come to, my lord, a state away, because now my lord is aware of the facts of this case. My lord, there is the page number, my lord. There are 2 joint investigations which had been done, my lord. Yes. One by the DYSP, dated 25/3/2016. Yes. It is started page number 89, my lord. Of the counter affidavit, my lord. 89 or 50? 56, my lord. 56. Yes. 1 minute. Yes. Yes, please proceed. Yes, my lord. This is, my lord, page number 56, my lord, 749. It is, my lord, the same 2/16/2015, my lord. Kindly see, my lord. Yes. कि यह कांड वादी सुभाष यादव, my lord, ये प्राथमिकी कांड संख्या 216/215, my lord, सिरदल्ला थाना के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर 150-200 व्यक्तियों के विरुद्ध जुआ खेलने के क्रम में आपस के वाद विवाद एवं हल्ला करने और जुआ खेलने से मना करने पर नाजायज मजमा बनाकर गाली गलौज करते हुए पुलिस बल को घेर कर हाथापाई करने
रोड़ा पत्थर चलाने, गश्ती वाहन का शीशा तोड़ देने और हथियार छीनने के प्रयास करने, सैफ जवान घनश्याम कुमार को पकड़कर मारपीट करते हुए हथियार छीनने के प्रयास करने एवं इसी क्रम में सैफ जवान घनश्याम कुमार के सरकारी राइफल से 3 चक्र गोली चल जाने जिससे 3 व्यक्तियों के जख्मी जाने के आरोप दर्ज किया मिलॉर्ड। हियर मिलॉर्ड इट इज ए रिलेटिंग टू एक्सीडेंटल फायरिंग। चल गया मिलॉर्ड। नाउ मिलॉर्ड इट इज 2/17/2015। यस। यह कांड वादी नागेंद्र कुमार के पिता प्यारे चौधरी चमोटा हाट थाना सिरदल्ला जिला नवादा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त सुभाष यादव, सहायक अवर निरीक्षक घनश्याम कुमार मिलॉर्ड, वीरेंद्र सिंह, गुप्तेश्वर सिंह, सुरेंद्र कुमार दुबे, आशीष वृद्ध दिवाली के अवसर पर परंपरा के अनुसार जुआ खेलते समय पकड़कर गाली गलौज मारपीट करते हुए पॉकेट से 1200 रुपये लेने और विरोध करने पर गोली चलाने के कारण वादी भतेज राकेश कुमार की घटना स्थल पर मृत्यु हो जाने के साथ उपेंद्र चौधरी के पिता मुद्रिका चौधरी, गोरेलाल चौधरी एंड छोटेलाल चौधरी को जख्मी बनाने का आरोप दर्ज किया है। मिलॉर्ड, these 2 injured people are witness in this case also, मिलॉर्ड। Yes. Now, मिलॉर्ड, only I will take very briefly, मिलॉर्ड, this because it is important. चौधरी पिता रमेश्वर चौधरी, अनुज कुमार पिता उमाकांत प्रसाद, स्थानीय मुखिया पति सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में घटना स्थल का निरीक्षण किया। इन दोनों कांडों का घटना स्थल ग्राम चमोथा स्थित पदमौल से लौंद बाजार की ओर से जाने वाली टूटी फूटी पक्की सड़क के उत्तरी किनारे पर सुरेश चौधरी पिता तेतर चौधरी के खपड़ैल मकान से सटे दक्षिण अवस्थित है। इसी स्थल पर गोली लगने के कारण राकेश कुमार की मृत्यु होने और उपेंद्र चौधरी एवं गोरेलाल चौधरी के जख्मी होने की बात बताई जाती है। यहाँ रोड के उत्तरी किनारे एवं सुरेश चौधरी के घर के बीच ग्रामीण नाला है। यहाँ पर सड़क पूरब पश्चिम की दिशा से गुजरती है। पूरब से यह सड़क करीब 20 से 25 गज के बाद दक्षिण की तरफ पदमौल की ओर से, जबकि पश्चिम की तरफ 20 से 25 गज जाने के बाद उत्तर की तरफ यह सड़क लौंद बाजार की ओर मुड़ जाती है। घटना स्थल के करीब 20 और 25 फीट दक्षिण पूरब की रोड सटे दक्षिण चंद्रिका प्रसाद यादव और लाल महतो का मकान है, जिसमें गणेश चौधरी के रजौली के द्वारा दवा दुकान चलाया जाता है। इस दुकान के सटे पश्चिम छोटेलाल प्रजापति पिता जगदीश प्रजापति अर्ध निर्मित बिना छत का सामने खुला दुकान नामक कमरा है, जिसके बाहर पश्चिमी दीवार के पास मिट्टी का एक छोटा टीलानुमा बना हुआ है। यहीं सैफ जवान घनश्याम। I think you need not read that because I am not going to enter. Yes, my lord. I appreciate, my lord. I am just telling you, my lord, that the circumstances in which, my lord, the incident has happened, because that particular house was a dead end, my lord, because he had, my lord, fled, and it was a dead end, my lord, and the people surrounded him, my lord. So, my lord, during that scuffle, my lord, they tried to snatch the AK-47, my lord, and my lord, any police can really know what do. Why investigation of 216 has been kept pending? Any plausible reason why 216 has been kept pending? On that point, Your Lordship, I have not taken any inputs. But it... Because there are two versions of this story. Ji. The IO should have investigated the case from both the angles. Yes, Your Lordship, you would find that in the Sanjukta Parivakshan Tipni, which my friend was reading, Your Lordship, both the cases were supervised simultaneously, and both the cases were supervised simultaneously. Yes, Your Lordship, and investigating agency was required to submit the police report in both the cases. Yes, Your Lordship. But because on this point, that why not, whether the charge sheet has been submitted in this case, since we are taking inputs of the case filed by the petitioner. On this point, you are not investigating the case from another angle, which had been the case of the
police, besides the case of Subhas Yadav. That was Then also Annexure 2. that has also been investigated. Both Where is that report? Have you held that that case is not No, my lord. No. They have found correct, not true? दोनों केसेस में विटनेस अलग अलग हैं. There is case. लेकिन दोनों केसेस जब एक ही अकरेंस का दो मैनर ऑफ अकरेंस एक ही ट्रांजैक्शन में हुआ है. हम जो सबमिट करना चाह रहे हैं, for an occurrence, there are two different versions. Yes. There are two different sets of witnesses also. Yes. The police has to, the investigating agency has to record the statement of the witnesses. And after investigation, Your Lordship, police report would be filed and the court would consider. Deepak Kumar, you need not tell me the procedure which is to be followed by police. इसमें दोनों तरफ. Tell me one thing. One occurrence has taken place. Now there are two different versions as to the manner of occurrence, the circumstances under which the occurrence has taken place. Two FIRs have been lodged. Whether or not the IO is required to investigate both the cases simultaneously and then finally come out with its opinion, whether the case lost by police is correct. If not correct, then what was the truth, whether the case lost by this private informant, this person is correct. You are filing a charge sheet in one of the cases, keeping the investigation of another case pending. Suppose tomorrow you come to a conclusion that no, the second case is also true. Would it not be conflicting? Lordship, during investigation of any case, the statement of the witnesses, disclosed by the witnesses. For what you are there? A statement of the witnesses, and then that those statements are to be analyzed by whom? अब witness यदि कह रहा है, witness के कहने से खाली हो जाएगा. You have to take the statement of the witnesses and then you are the IO of the case. Your senior officers are the supervising authority. You have to form an opinion. You have to form an opinion and find out the truth. दोनों तरफ से विटनेस कहेगा. क्या कीजिएगा आप? दोनों दो वर्सन है, दोनों में चार्जशीट फाइल कर दीजिएगा. आपके लिए तो सबसे इजी काम है ना कि दोनों के तरफ से विटनेसेस ने कहा हमने चार्जशीट फाइल कर दिया दोनों में. अब आप लोग जाइए कोर्ट में अपना उलझते रहिए. Your role is to find out the truth after investigation. ये आपने इन्वेस्टिगेशन ही हाफ हार्टेडली किया है. यदि ये इसको देखा जाएगा तो मेरे पास रिसेंट का इनपुट नहीं है, इसलिए लॉर्डशिप रिसेंट का इनपुट आप लीजिए. To meet appears subject to further hearing. Mr. Indradev Prasad is also here. Subject to further hearing, prima facie to meet appears that you have filed the charge sheet hurriedly without properly investigating both the cases. You should have investigated both the cases simultaneously and then you were required to take a call whether the case lost by police is wrong and false. What was the... This much is clear, Your Lordship, by the charge sheet submitted against the petitioner under section 304. This much is clear that the investigating agency has come to a conclusion that the act done by the petitioner was rash. और इवन जो संयुक्त पर्यवेक्षण टिप्पणी जो पढ़ा जाता but have you investigated the case from the angle of the petitioner, the informant Subhas Yadav? उसका भी इन्वेस्टिगेशन इसमें यदि देखा जाएगा कहाँ है? आप दिखाइए ना, आप मुझे एक ऑब्जर्वेशन दिखाइए सुपरवाइजिंग अथॉरिटी का कि दोनों केस को साइमल्टेनियसली उसने इन्वेस्टिगेट करके ये पाया कि सुभाष यादव का जो वर्सन था वो गलत था. ये बाय मिस्टेक नहीं फायरिंग हुआ है एंड एक्सीडेंटली गोली नहीं चली है उस भगदड़ में. when he was surrounded by the local people who are said to be the miscreants, आप वही फाइंडिंग तो देंगे ना. ये तो एडमिटेड पोजीशन है कि इसकी गोली लगी है.
But under what circumstances? Under what circumstances? Suppose कीजिए कि अगर ये बात सही निकल गया इतना भी कि वो वहां गया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए और उसमें ही वॉज सराउंडेड बाय द लोकल मिसक्रिएंट्स, his own life was in danger, he was left behind by his colleagues, they had gone to a different direction, and then he was surrounded by the miscreants. There, while trying to save himself, the firing took place. Then can it be said that he is liable to be charge sheeted under 302? दोनों केस को और दोनों का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को जब हम लोग साथ में एक साथ देख के पढ़ते हैं तो वही तो देखना चाहिए आपको। तो ये लगता है, दिस इज व्हाट आई गैदर योर लॉर्डशिप, इट्स नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट गिवन बाय द वेयर इज द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ द अनदर केस? आपने कहा दोनों को जब पढ़ते हैं तो कहाँ है वो पढ़ने के लिए? मुझे पढ़ाइए ना। संयुक्त पर्यवेक्षण टिप्पणी में दोनों का है। संयुक्त पर्यवेक्षण टिप्पणी से तो हो जाएगा क्या? चार्जशीट पढ़िए जरा संयुक्त पर्यवेक्षण टिप्पणी में क्या आया है जी। What opinion has been formed? Page बताइए। Peज नंबर 64 my lord. Yes. 64 my lord. It is in the देखिए अब आपको यही देखिए यहाँ पर क्या है जी। इस पूरे प्रकरण में हाँ पढ़िए जरा उसको, रुकिए आप जरा सर इनको पढ़ने दीजिए, पढ़िए। इस पूरे प्रकरण में सैप 381 यही से कहा जा रहा है। हाँ हाँ। घनश्याम कुमार के द्वारा धैर्य एवं संयम से काम नहीं लिया गया और स्वेच्छापूर्वक अपने सरकारी AK-47 राइफल से गोली चला दी गई। हालांकि सैप घनश्याम कुमार द्वारा ग्रामीणों की हत्या करने या जख्मी करने की मंशा नहीं रही होगी, फिर भी उनके द्वारा संयम एवं धैर्य तो के क्या हुआ फिर? अगर ये फाइंडिंग है कि मंशा नहीं रही होगी तो 302 कहाँ अट्रैक्ट होगा? 302 तो है ही नहीं, 304 में चार्जशीट सबमिट हुआ है। 304 पार्ट सिर्फ 304 है। नो पार्ट 304 304 which part? Part 1 part 2? नो पार्ट नॉट मेंशन्ड below। सिर्फ 304 ही है चार्जशीट में जो लिखा है। जो लिखा है तो यू आर द लॉयर रिप्रेजेंटिंग देम, यू हैव टू टेक अ स्टैंड अंडर सेक्शन 304 ओनली। आगे पढ़िए। इस मामले में गश्ती दल के प्रभारी सहायक अवर निरीक्षक सुभाष यादव सहित सैप बल के अन्य जवानों की कोई भूमिका परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि सहायक अवर निरीक्षक सुभाष यादव एवं सैप के अन्य जवान विधिपूर्ण तरीके से दीपावली के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण और रात्रि गश्ती के क्रम में लौंद बाजार चमोथा गए थे। अच्छा ठीक है, देखिए पेज 65 पर जी जो डायरेक्शन दे रहे हैं सुपरवाइजिंग अथॉरिटी जी, डायरेक्शन नंबर 5 पढ़िए। कांड संख्या 216/2015 में घटना की रात्रि लौंद बाजार में जुआ खेल रहे ग्रामीणों का पता करें, पता चलने पर आदेश प्राप्ति के उपरांत अग्रतर कार्रवाई करें। तो आप ये इन्वेस्टिगेशन अधूरा है कि नहीं? ये आपने पता ही नहीं किया ये कि उस रात्रि क्या घटना घटी वहाँ? ये 2016 का ये रिपोर्ट है हुजूर। हाँ 2016 का रिपोर्ट है, तो चार्जशीट आपने कर दिया इसी बेसिस पर ना? चार्जशीट तो आपने इसी बेसिस पर कर दिया। उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन हाउ द कोर्ट कैन बिलीव यू व्हेन यू हैव फाइल्ड इट इज योर काउंटर एफिडेविट, इट मींस यू हैव नॉट ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड द एंटायर मटेरियल्स। नहीं, सारा का सारा केस डायरी हुजूर के पास है। तो 2016 तक का ही है ना? यू आर योरसेल्फ सेइंग कि ये 16 तक का ही है। कोर्ट विल हैव टू केस डायरी में 2019 का भी है, आगे भी है। Why did not you file the entire materials? केस डायरी हुजूर के पास है सारा का सारा। नेक्स्ट में जो हम लोग फाइल किए हैं, ये काउंटर एफिडेविट जो फाइल किए हैं 2016 का क्या पोजीशन है केस का? अभी तक आपको जानकारी नहीं है। चलिए आप बोलिए इंद्रदेव बाबू। हम तो एक प्रति शपथ पत्र दाखिल कर दिया है। प्रति शपथ पत्र का
पैराग्राफ 5 से 9 हुजूर हम पढ़ देते हैं। पढ़िए। 5, यह कि मेरे उक्त आवेदन पत्र में धारा 3110/325 SC/ST एक्ट का कोई आरोप नहीं है। लगता है कि गलत मंशा से प्रथम सूचना रिपोर्ट में गलत धारा लगा दी गई है। 6, यह कि पुलिस अन्वेषण के क्रम में धारा 3110/325 SC/ST एक्ट हट जाना चाहिए था, किंतु पुलिस अन्वेषण के क्रम में भी यह गलत धारा नहीं हट सका, जो अनुसंधानकर्ता एवं पर्यवेक्षणकर्ता की गलती, लापरवाही एवं मनमानी का एक ऐसा उदाहरण है जिसे जानकर लोग अचंभित हैं। 7, यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए अभिकथन और उसके समर्थन में एकत्रित किए गए साक्ष्य के आधार पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302, 307, 379, 34 भारतीय दंड विधान एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित होना चाहिए था, किंतु लगता है कि जानबूझकर गलत धारा 304 एवं 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत समर्पित की गई है, जो इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि पुलिस अन्वेषण त्रुटिपूर्ण है। इस वाद की प्रार्थना संख्या 1, 2 एवं 1, 3 स्वीकृत होने के योग्य है जी। 1, 1, 2 और 1, 3। 1, 2 है कि SC/ST एक्ट का धारा हटाने के लिए, और 1, 3 इनका है कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच करने के लिए। तो ये तो प्रार्थना इनका एकदम न्याय संगत है, ये तो स्वीकृत होना चाहिए। You have made my work easy then. इसको जो है हम भेज देते हैं जी, और प्रेस इन्वेस्टिगेशन करते हैं CID को करने के लिए। जी ठीक है। ये इनका आपका SC/ST एक्ट और ये सब तो he is himself saying कि गलत लगाया। Yes, my lord. And you kindly appreciate, my lord, when this FIR has been registered, my lord, we have made a representation to the Superintendent of Police, Nevada, my lord. And upon that, my lord, 302 has been converted in 304, my lord. Arms Act, my lord, when the petition was filed, my lord, the petition was entertained and given a direction, Arms Act I has will gone. say that because investigation of one of the cases has been kept pending so far. There was no reason for filing of the charge sheet in haste in another case. And that too, the informant is himself saying कि आपने कहाँ से लगा दिया ये SC/ST एक्ट और ये सब। And still after the investigation, my lord. Even after investigation. This is the Saudi investigation, is a classic example, my lord. And moreover, my lord, if you go through the entire contents of the charge sheet, my lord, it shows how the police leisurely gone into the entire investigation. At least you should reach to the culprit. If, my lord, really, if something has happened, my lord, including the petitioner, my lord, because the petitioner was on the duty, my lord. The petitioner has gone with the AK-47. I am passing order. इसको पार्टी बना दीजिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को पार्टी बना दीजिए। लिखिए। CID को भेज देते हैं इसको। जी हाँ ठीक है। Both the cases will be reinvestigated. ठीक है, लिखिए। Pat ji, heard land counsel for the petitioner, land counsel for the informant, as also learned AC to GP4 for the state. Next, petitioner in the present case is seeking the following reliefs: Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4. Next, brief facts of the case. In Sardala PS case number 217 of 2015, registered on 12/11/2015 at about 2:45 PM. The allegation is that on 11/11/2015 at about
12 p.m. in the night, the informant had gone to search his deceased nephew, Rakesh Kumar alias Pappu Chaudhary, and at Chamotha Hut, some children were said to have been playing gambling on the occasion of Deepavali. Full stop. It is alleged that during this period, the SAP police force is said to have caught hold of the informant from behind and allegedly removed rupees 1200 from his pocket, as also abused the informant and assaulted him. Full stop. The informant claims that he can identify the assailant by face. Full stop. He has identified the said person as Assistant Sub-Inspector of Police, namely Subhas Yadav, who is alleged to have been with SAP force. Full stop. Learned counsel for the petitioner submits that as per further allegation, they said Subhas Yadav, after snatching money I take it otherwise. It is alleged that when the informant started crying, all children playing there started fleeing away. Full stop. Allegation is also that all the police force had consumed wine and had started firing. And in this firing, the nephew of the informant who was playing there received gunfire injury and died at the alleged place of offense. Full stop. One Upendra Chaudhary and another Gorelal Chaudhary had received gunfire injuries, gunshot injuries, and they were referred for treatment to a private hospital at Patna. Full stop. Next. Contrary to the version of the informant, the SAP Jawans who were led by ASI Subhas Yadav have a different story. Full stop. ASI Subhas Yadav has lost a complaint with Sirdala police station, giving rise to Sirdala PS case number 216 of 2015 under section so and so, para 5 se le lijiye, against 150-200 unknown persons for gambling, fighting among them, creating nuisance, and pelting stones, bricks, breaking the glass of the police vehicle, snatching of rifles, scuffling and beating to Mr. Ghanshyam Kumar, within bracket the petitioner. Full stop. In this FIR, the allegation against the unknown persons is to attempt of killing the police official, in which 3 rounds firing took place mistakenly.
Full stop. Copy of both the FIRs have been enclosed as Annexure 1 and 2 respectively. Next, Land Council for the petitioner submits that the version of the FIRs, two FIRs, are completely contradictory. Full stop. The investigating officer was supposed to investigate both the cases simultaneously to find out the truth. But in this case, while the investigation of Sirdalla PS case number 216 of 2015 has been kept pending till date, in Sirdalla PS case number 217 of 2015, police has hurriedly submitted a charge sheet under section 304 IPC and section 3 within bracket 1 within bracket Roman 10, 3 within bracket 2 within bracket Roman 5 of the Prevention of Atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act 1989, hereinafter referred to as SC/ST Act. Bracket closed. Full stop. The said charge sheet has been sought to be challenged by filing an interlocutory application number 1 of 2022, which has been allowed, and the statements made in the interlocutory application with the relief spread therein have been treated as part and parcel of the writ application. Full stop. Next, this court has given opportunity to the informant to respond to the writ application and the interlocutory application, and the informant has filed counter affidavit. Full stop. Similarly, the official respondent obligate state has also filed a counter affidavit, including therewith the copy of the case diary. Full stop. Next. In course of argument, learned counsel for the state submits that so far as the investigation of Sirdalla PS case number 216 of 15 is concerned, presently he has no instruction. But one thing is evident, that while filing charge sheet in Sirdalla PS case number 217 of 15, the investigation of case number 216 of 15 was kept pending. Full stop. Next, land counsel for the informant has, though opposed this writ application, but at the same time he has supported the writ petition on certain points. Full stop. In his opinion, the police was wrong in lodging of the FIR under the provisions of the SC/ST Act, because the said provision could not have been attracted in the present case. Full stop. He has further submitted that surprisingly, even after investigation, police has not dropped the sections under the SC/ST Act, and charge sheet has been submitted unmindfully under the provisions of the SC/ST Act. Full stop. Mr. Indradev Prasad, land counsel for the informant, has thus submitted that so far as the prayer made in paragraph 1 within bracket Roman 2 of the writ petition is concerned, the same
may be allowed. Full stop. Land Council has, however, submitted at the same time that the investigating agencies should have submitted charge sheet in this case under section 302 IPC instead of section 304 IPC. Full stop. Next, towards the end of the argument, Land Council for the state as well as the informant agreed that in this case the investigating agency was required to investigate both the cases together to find out the truth. And in the present circumstance, where in one of the cases only charge sheet had been filed, that too under wrong provisions and provisions of law, under which is not attracted, they would have no objection if the charge sheet in question is set aside and the entire investigation of both the cases are transferred to the Criminal Investigation Department, Government of Bihar for a proper, fair and impartial investigation of both the cases. Afresh. Next. Land Council for the petitioner agrees with this and submits that he would be satisfied if both the cases are reinvestigated by an independent agency such as CBCID, Government of Bihar. Next, having heard Land Council for the parties and upon perusal of the records, two facts which have transpired seem to be the admitted facts. Full stop. Firstly, police was required to, police has submitted charge sheet only in Sirdala PS case number 217 of 15, that too under wrong provisions of law. Full stop. The informant himself agrees that the provisions of SC/ST Act would not be attracted. Full stop. Secondly, the investigation of Sirdala PS case number 216 of 15 has been kept pending, whereas both were required to be investigated together. Stop. Next, in the given facts and circumstances of the case, this court is of the considered opinion that so far as the charge sheet bearing number so and so IS ले लीजिएगा is concerned, the same is liable to be set aside. Full stop. This court would not quash the first information report at this stage, as even Land Council for the parties have agreed that both the cases require re-investigation or fresh investigation by an independent agency. Full stop. In that view of the matter, this court directs the CBCID, Government of Bihar, to take over the investigation of both the cases and conduct a fresh investigation in respect of both of them. Full stop. The investigation must be fair, impartial, fair, impartial and independent. Full stop. Next, let the CBCID, Government of Bihar, through its ADG, be added as party respond number so and so. Full stop. Mr. Deepak Kumar, AC2, GP4 accepts notice on behalf of him, on behalf of CBCID. Full stop. The CBCID cell, the Superintendent of Police, Nevada, within bracket respond number 2, is directed to hand over the entire case records of both the cases to the CBCID within a period of 2 weeks from today. Full stop. Next,
the prayer as contained in paragraph 1, then bracket Roman 2, is allowed in view of the admitted position that the provision of SC/ST Act would not be applicable. Full stop. This writ application is allowed to the extent indicated herein above. Full stop. Chaliye. Now you will not go back empty-handed. No, my lord, one more submission, my lord, no coercive step may be taken, my lord, during the course of investigation, my lord, because we have cooperated. See, since I have disposed of the writ application, transferred the investigation, let them take a view. If any coercive action would be taken, you will have a remedy. Okay. Taken? Well, I'm grateful. 317. May I please, Your Lordship? Yes. In this case, Your Lordship, right now I have been given a supplementary affidavit by the petitioner, Your Lordship. Yes. My Lord, on the last occasion, personal appearance of the petitioner was. Where is the headmaster? He is there. Petitioner. Ask him to come. Please come. Who is for the wife? I am appearing. You are Your paying. Lordship. You are. Your statement was that he is not paying the maintenance. Lordship, due to misunderstanding, Your Lordship, this statement was given. What happened in this case, Your Lordship, that... Wrong statement was given by you. No. That was misleading of court. नहीं, ये इंस्ट्रक्शन का कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाया था ड्यू टू दैट बेसिस, योर लॉर्डशिप. लेकिन एक चीज है इसमें, जैसे 2011 से जब ये केस फाइल हुआ, उसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस का भी कंप्लीट पेमेंट ये नहीं किए थे. No, you tell me one thing. लॉर्डशिप, Whether he is paying the maintenance amount continuously or not. गैप कर करके दे रहे हैं, और उसमें भी How much is due? और How much amount you are paying presently? हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं मैडम, डायरेक्ट हमारी सैलरी से कट जा रहा है. कितना कट रहा है वही तो आप बताइए. अलग हमने एनेक्शर में लगाया मैडम, आपका अलग अलग डेट्स पे हम माइलॉर्ड का अटेंशन पेज नंबर 25 ऑफ द सप्लीमेंट्री एफिडेविट पे हम ले जाना चाहेंगे माइलॉर्ड. All right. इसमें माइलॉर्ड
नीचे से चौथा है 1 जनवरी 2022 को 24,160 रुपए। फिर अगले पेज पे माय लॉर्ड, ये क्या है 24,160? ये हमारे अकाउंट से अपने आप कट गया, इनके पास मेंटेनेंस राशि पहुंच गई। कितना सैलरी है आपका? कितना सैलरी है? 77 सर। 77,000। 24,000 रुपया किनको किनको मिला? ओपी नंबर 2 को माय लॉर्ड। अकेला मिला या उसके साथ? उसमें सबको ही है इंक्लूड माय लॉर्ड। लगातार एक सीरीज है माय लॉर्ड, जैसे 1 जनवरी को मिला, फिर अगले 19 जनवरी को भी मिला 24,160 रुपए। राइट। So every month this is being deducted. Exactly my lord. My lord, in totality, since 13th of February 18 to 27th of March 19, we have paid a maintenance amount of about 3,753 rupees. And for the time duration, right from the starting to 22nd of February 2016, we have paid a maintenance amount of 2,35,000, my lord. No, that is not material. 2 lakhs बोलने की जरूरत नहीं है. You are required to say only this much, that as per direction of the court you are making payment. Exactly, my lord. That money is going in her account. Exactly, my lord. Then हम एक चीज just operative part of the impugned order of the family court, your lordship. So you That are is on getting page the amount. 5. It is an admitted position that you are getting the amount. Lordship, it appears. But नहीं, फिर आप it appears बोलते हैं. Whole heartedly बोलिए जरा. lordship, अभी तुरंत ये Don't feel shy in accepting. If it is true, then you should come out with a categorical statement that अभी yes, सारा I'm getting डिटेल्स it. ये हमको प्रोवाइड किए हैं. प्रोवाइड किया. देखिए आपके वेरीफाई आपके नहीं कर क्लाइंट लेते. ने अगर आपको गलत इंस्ट्रक्शन दिया, जी I'm giving you this benefit. You हम can समझ सकते understand. I'm giving you this benefit only समझ सकते because you are appearing for the wife. I do not want to burden her. Otherwise, I would have taken it seriously. लॉर्डशिप. हुजूर, मेरा एक फर्दर सबमिशन होगा. I apologize, your lordship. जो भी मेरी तरफ से हुआ. नहीं, I disclosed it to you. लेकिन I am disclosing my mind. लॉर्डशिप. I would have immediately taken a view against you. But the moment I thought that, it came in my mind that you are appearing for a woman, and that too a neglected woman who is looking for her maintenance. So she should not be burdened with that. लेकिन इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए ना. ये गलत है. हम इसको मतलब. हाँ. अब इसको हम मेरिट पर देख लेते हैं. ये आए हुए हैं. जी, इनके साथ अभी तीन बच्ची भी रह रही है. हाँ. सबसे बड़ी बेटी का एज है 29 इयर्स, उसके बाद 26 इयर्स और 23 इयर्स. यस. सब लोग अनमैरिड हैं. लेकिन ये जो अभी काउंटर हमको दिए हैं, मतलब सप्लीमेंट्री जो दिए हैं, उसमें कहते हैं कि इनको जानकारी हुई है कि 2 की शादी हो गई है. का तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हुजूर हम सब लोगों को बुलवा देते हैं. सबसे अच्छा होगा एक एफिडेविट मंगवा लिया जाए. नहीं, उनको बोलने दीजिए. क्या बोलिए आपको क्या जानकारी है? जी, किसी शिक्षक के द्वारा पता चला. शिक्षक के द्वारा पता चला. जी. तो ये आपने तो डाइवोर्स नहीं लिया है ना इनसे. तो ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है पता करना कि हाँ क्या हो रहा है, क्या जी परिवार की क्या समस्या है. आपने दूसरी शादी की है क्या? जी नहीं. नहीं, आप सही बताइएगा मुझे. जी नहीं तो फिर ये पता लग जाएगा. ऐसा नहीं है. कोर्ट जो है जी, कोर्ट को अगर इंक्वायरी करवाएंगे तो पता लग जाएगा आपकी असलियत. तो इसलिए आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आपने अगर दूसरी शादी की है तो वो भी बता सकते हैं आप. जी नहीं सर. यहाँ पर आपको इमीडिएटली यहाँ से सजा नहीं होने वाली है उसके लिए. लेकिन झूठ बोलिएगा, अगर गलत बोलिएगा तो उसके लिए सजा हो सकती है. समझ रहे हैं बात? समझाइए उनको. पूरी वस्तु स्थिति मुझे असेस करने दीजिए. आप जो आया है, आप जो है पूरी तरह कोऑपरेट कीजिए, सच बोल करके, सेकंड वाइफ है ना. क्योंकि हुजूर हम सप्लीमेंट्री एफिडेविट के पैरा 7 पर थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहेंगे हुजूर का.
हाँ, देखते हैं उसको जी। नहीं, एक चीज और अगर दो बेटी की शादी हो गई है जी, तो ठीक है, नहीं तो इनकी तो जिम्मेवारी बनती है ना। इसी वजह से हम हुजूर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पैरा 7 को एक बार पढ़ लिया जाए हुजूर। पैरा 7 जी, अगर हुजूर परमिट करें तो मैं पढ़ के बोलूं। हाँ बिल्कुल पढ़िए। That the wife of the petitioner, that is OP number 2, is having good terms with some criminal minded people, and earlier on several occasions she had sent many of them to beat and injure the petitioner. This is the only reason why he left many of the court dates unattended in the fear while the proceedings were going on in the court of learned principal judge, family court Khagaria, where the learned judge in the judgment dated 19th of January 2017 gave wrong remarks too upon his absence there. इसमें नीचे के जज साहब का द्वारा ये कहा गया, वहां पर वकील रख करके ये पिटीशन फाइल कराना चाहिए था ना। या आप आज यहाँ हाई कोर्ट में बोलने आए हैं? जिस दिन आपको कोई, तब हम वही तो समस्या। अगर कोई ऐसी बात थी he should have filed an application in the court below कि साहब this is the reason why I am absent. Please provide me some protection so that I can come and depose in the court. Exactly. नहीं, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पे इनको अपीयर होना था। वो सारा कुछ डिस्कस है फैमिली कोर्ट के ऑर्डर में। यही नहीं, हम ऐसा है सुनी तो आओ, बहुत सी चीजों पर फैक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं। नहीं, ठीक है, हम let us have some progressive view only. जस्ट हम एक पीछे की बहुत सी बातों में बीटिंग अबाउट द बुश करने से कोई फायदा नहीं हो। आप प्रोग्रेसिव व्यू यही है इसमें कि जो मेंटेनेंस आपको अलाउ हुआ है जी, इनको 77,000 की सैलरी मिल रही है जी, 24,000 रुपया दे रहे हैं ये। उसमें इंटरफेयर करने का क्वेश्चन नहीं उठता है। उस रुपए में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो आपको मिल ही रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई इन्हांसमेंट वगैरह की जरूरत है, उसके लिए आप वहां फाइल कीजिए फॉर अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर। अब एक जी है ना, रही बात एक ही बात है जो सिर्फ लग रही है। हम हुजूर को बस इन्हीं का दिखलाना चाह रहे हैं। शादी वाली बात जो है, बेटियों की शादी वाली बात जी, उस पर जरा हम इनसे पूछ रहे थे कि उसमें इनका क्या है अप्रोच। इन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन इनको कहीं से सूचना ही नहीं दी गई। उनके तक पहुंचने का इनको रास्ता ही नहीं दिया जाता है। अपनी बेटी से ना मिलने दिया जाता है, ना कुछ करने दिया जाता है। ऐसा कीजिए, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, हम मेडिएशन सेंटर में भेज रहे हैं, आप बुलाइए अपने क्लाइंट को। जी जी, आप अपने क्लाइंट को बुलाइए यहाँ मेडिएशन सेंटर में, बैठाइए सबको सामने में। जी हाँ हाँ, एकदम होना भी चाहिए। जितना गिला शिकवा है सब शिकायत दूर कीजिए, आपस में एक दूसरे को बैठाइए। हुजूर से एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर एक बार ओपी नंबर 2 और ये जो बेटी जो है इनकी है, जिनकी शादी की हम बात कर रहे हैं, उनको एक बार पर्सनली अपीयर करवा के एक बार पूछ लिया। कोर्ट में क्या को अपीयर कराए? हुजूर सच्चाई सामने आ जाती, या एक एफिडेविट दे दें ये हमको, जैसे हम मीडिएशन में अगर भेज दें तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मीडिएशन में अगर भेज दें सर हुजूर, लेकिन उसे ठीक है वो तो हम मानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर ये चीज स्पष्ट हो जाता, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है लर्नेड कोर्ट बिलो का, उसमें है कि जो एक प्रोविजन है मान लो, हम सेकंड लास्ट पेज में नीचे के चौथे लाइन से हम पढ़ना चाहेंगे कि इसलिए विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने प्राप्त वेतन को मां स्वयं, आवेदिका श्वेता कुमारी, सुषमा कुमारी, दीप्ति कुमारी एवं रजनेश कुमार में बराबर बराबर हिस्सा करें तथा प्रत्येक को उसके हिस्से को उसके बैंक खाता में जमा करें। थोड़ा सा मार्क किया जाएगा माय लॉर्ड। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो या किसी सदस्य की शादी हो गई हो तो उनके हिस्से का शेष बचे सदस्यों के बीच बराबर बराबर हिस्सा करके उनके खाते में जमा करें। तो यहाँ पे तो ये सफर कर रहे हैं माय लॉर्ड। इस चीज का अगर डिसाइड हो जाता फिर हमको मीडिएशन में भेज दिया जाता, हम खुश रहते। क्या डिसाइड हो जाता कि इनको जो शेयर देना है उनके खाते में, तो 2 बच्चियों की तो शादी हो गई है इनके जानकारी के अनुसार, लेकिन ये कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई है। आपने कहाँ फाइल किया कि उनकी शादी हो गई? हमने अपने सप्लीमेंट्री के पैरा नंबर 6 में लिखा। ओनली वेग स्टेटमेंट, क्लैरिटी नहीं है ना कि दोनों की शादी हो गई। माय लॉर्ड, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना कोई डॉक्यूमेंट्स था, हम उनके पास पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर उनसे एक एफिडेविट मंगवा लिया जाए कि उनकी शादी नहीं हुई है।
ऐसा कीजिए, नहीं तो हम तो इसको मतलब हम चैम्बर्स में रख देते जी जी सबसे अच्छा होगा। हैं, बुला लीजिए आप। और एक चीज और है, पैराग्राफ 3 अभी जो ये दिए हैं उसका प्रिलिमिनरी इंटरेक्शन हाँ हाँ वो जरूरी बात है, जो है ना, इसको भेज देंगे। वो सबसे अच्छा होगा और सबको बुला लें। Pursuant to the last order, the petitioner is present in person. Full stop. This court has been informed that a sum of rupees 24,160 is being deducted from his salary every month, and the same is remitted in the account of the opposite party number 2. Full stop. Next, Land Council for the opposite party number 2 accepts that on the last date he had mistakenly stated that the maintenance amount is not being paid. Full stop. This had happened in want of proper instruction. Full stop. Next, Land Council for the petitioner submits that as per operating part of the impugned order, the salary of the petitioner is required to be apportioned among the persons who are mentioned therein. Full stop. According to him, 2 daughters of the petitioner have already been married, but the true and correct fact is not being disclosed in this court. Full stop. The request has been made by learned counsel for the petitioner to keep this matter at least on one date in chambers before sending the records to mediation, if at all required. Stop. Next, Mr. Sujit Kumar Singh, learned counsel for the opposite party number 2, agrees for the same. Next, let this case be listed in chambers on 9th January. On 9th January 2023 at 2:15 p.m. Full stop. On the said date, the petitioner, the OP number 2, and the daughters of the petitioner shall be present for interaction. Full stop. Place this matter accordingly. एक क्लियर होगा छोटा सा, ये पैराग्राफ 3 में लिखे हैं कि ये मिडिल स्कूल में हेडमास्टर हैं, लेकिन हम जो इंस्ट्रक्शन है सामने है तो क्लियर हो जाए, ज़्यादा अच्छा है कि उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया गया है. नाउ ही इज द हेडमास्टर ऑफ द हाई स्कूल. स्कूल हाई स्कूल हो गया ना. Whether he is teaching in the upgraded high school या he is still in middle school. अब वो हाई स्कूल हो गया. हाँ तो हाई स्कूल और हाई स्कूल के ये हेडमास्टर है आप हाई स्कूल के. सर टीजीटी टीचर है सर. टीचर है वहाँ जी, प्रभारी है सर. प्रभारी है जी. ठीक है, वही मटेरियल. इनका पर्सनल अपीयरेंस. अब पर्सनल अपीयरेंस का काम चैम्बर्स में जब चैम्बर में तो नहीं वो डिस्पेंस करने के लिए. अब पर्सनल अपीयरेंस का कहाँ सवाल है. चैम्बर में रहेगा. मच ऑब्लाइज्ड माय लॉर्ड. I again, you lordship, feel very sad, your lordship, because you got benefit of appearing on behalf of the lady. Because much obliged. 289 प्रमोद कुमार वर्मा. Yes. Last occasion he was also absent and today he is. Last date also he was absent. Yes, my lord. लिखिए. Once again, no one appears for the petitioner to place this application. Full stop. Ms. Pranati Singh, learned APP for the state, is present. Full stop. On 15/12/2022 also, there was no representation on behalf of the petitioner. Next, this court has perused the impugned judgment
Full stop. It appears on perusal thereof that in the family court, even as the opposite party, the husband as opposite party appeared and filed his reply, but in course of evidence he did not lead any evidence. Full stop. The evidence of the applicant, wife and her witnesses remained uncontroverted. Altogether 5 Full stop. No dispute is there on the point that the applicant is legally wedded wife of the opposite party. Full stop. The applicant has laid evidence to the effect that the opposite party has performed a second marriage and thereafter he is not taking care of the applicant wife. Full stop. The opposite party is working as a government driver and is earning salary. Full stop. In the aforesaid view of the matter, next karke. In the aforesaid view of the matter, this court finds that the learned principal judge family court, Nevada, has not committed any error. Full stop. The amount of maintenance awarded to the applicant wife is a meager sum of rupees 2,000 per month, which needs no interference. Full stop. Next, this revision application has no merit. It is dismissed accordingly. 290. Ravin Kumar. I pray that on fresh instruction whether he has to pursue the matter or not. Please don't ask for adjournment. Okay. Please don't ask for adjournment. That too for this petty amount of rupees 2,000. Actually, my lord, this is for the parents. Parents have filed this case. Parents have filed, then all the more. Because they are, so that's why my lord I wanted. आप सोचिए ना, पेरेंट्स को आपके विरुद्ध फाइल करना पड़ रहा है. ऐसा हुजूर कि हम. What kind of son you are? My lord, they are under control of my younger brother who has also Maybe been a party maybe in that this. they are under control. What is their independent source of income? So what is their independent source of income? Nothing. And what is your income? My lord, they say that because both the sons were made the party. Yes. My lord, I had made all the expenses with regard to sister's marriage and my. अरे माँ बाप को भाई आप लोग क्या? इसीलिए हमारा फर्स्ट सबमिशन कुछ नहीं है इसमें कि परस्यू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. I will not keep it pending. माँ और बाप दोनों आपके जाकर के कोर्ट में खड़े होकर गवाही दे रहे हैं और आप 2,000 रुपया देने में बुढ़ापे में, पिता की उम्र 75 वर्ष और माँ की उम्र 65 से 70 वर्ष, और आप जो है वृद्धा पेंशन इनको मिलता है 200 रुपया. इतना तो आपकी जिम्मेवारी है कहीं से मजदूरी करके भी खिलाने की. लिखिए हेड लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट भी हैं मिस्टर फहीमुद्दीन लर्नेड एपीपी फॉर द स्टेट. Petitioner in this case is aggrieved by and dissatisfied with the judgment and order dated so and so para 1.
Next, this court has learned counsel for the petitioner submits that the applicants in the learned court below, in the learned family court, are the parents of this petitioner who have been awarded a sum of rupees 2,000 each towards maintenance. Full stop. Next, this court has perused the impugned judgment. Full stop. The learned family court has discussed the entire materials which are available on the record by way of evidence. Full stop. In this court, no plausible ground has been raised in course of argument so as to. It was submission before the court below itself that I want to keep my parents. So as to. It was stand of this petition. Contest the impugned judgment. Full stop. It has been rightly pointed out by learned counsel for the petitioner that in fact the stand of the petitioner in the court below was that he would keep his parents and maintain them. Next, in the aforesaid view of the matter, this court finds no reason to interfere with the impugned judgment. Full stop. This application has no merit. It is dismissed. 292. Yes. इन्हांस के लिए बच्चों को तो दिया है 1200 रुपया, वाइफ को नहीं दिया है, उसी के लिए आए हैं। वहाँ वो भी पेमेंट नहीं हो रहा है। क्या सैलरी क्या है? वो शायद राजमिस्त्री है। कितना मिल रहा है आपको भी? 700 रुपये रोज। हम तो वाइफ हैं। कितना मिल रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं, ऑर्डर तो हुआ है लेकिन कुछ नहीं, उसके लिए भी मिसलेनियस से वहाँ फाइल है सिविल। ऑर्डर कितना हुआ है? ऑर्डर 1200 रुपया, 3 बच्चे हैं उनको। आपको क्यों नहीं? कुछ नहीं, इसलिए कि बहुत जमीन है, हम बेचे हैं, यही सब। Issue notice to the appointed party in the revision as well as interlocutory application by both modes, requisites for which must be filed within 2 weeks. Also call for the records from the learned court below. Learned family court मुंगेर का है ना? जी। Family court मुंगेर. List this case after service of notice. आइए हुजूर, लिमिटेशन के लिए। दोनों में नोटिस कर दिया। लिमिटेशन में भी उनको सुनना पड़ेगा ना? जी। 293. Second paragraph. Yes, please. How much is the maintenance amount? Question Lordship involved is that she is not the legally wedded wife of the petitioner. Is there That any question has declaration not- to that effect by a competent court of law? That has not been decided by the impugned order. Is there any declaration to that effect by any competent court of law? No. You should have filed an application seeking a declaration to that effect. No, the wife is married, he was married in 1972. Yes. And wife is Vidyavati Devi. And the father-in-law, the father of the petitioner, disputed a deed of gift in 2074, 1974, of 19 kathas. Now she... Please come to page 3 Ji. of the impugned order. Ji. And this one paragraph, I think your junior can read this paragraph after analyzing the evidences. हम पढ़ देते हैं. After analyzing the evidence and documents available in the court, it is clear that the OP filed a criminal case against the petitioner for committing murder of second wife Shanti Devi
by Baga PS case number so and so. In further beyond, he has admitted that the petitioner Leelavati Devi is his first wife and married 7-8 years ago. This fact has also been supported by OPD evidence. Plus, this is a criminal case. For some time she was there. Oh, no, I am not. I am only on this point that for purpose of section 125 CRPC, what is required? Is a determination? There was no, not determination like a suit. But if the question... Court is only required to judge whether the applicant has brought sufficient materials so as to call upon the court to provide him or her the benefit of section 125 CRPC. Somebody is claiming that I am his legally wedded wife. Yes. And before the court there is a statement of that person which is in respect of a judicial proceeding. In a judicial proceeding, that person has stated that yes, she is my wife. What else is required? No, binding of a criminal code may not be binding in a civil proceeding. That proposition is all right. I am not talking of finding. So it should have been... It is your statement. It should have been clearly established. You are not paying anything. No, I retired into the class 4 peon lordships. Yes, must be getting pension. Retired in 2015. Are you paying or not? My salary is being deducted. हाँ तो देते रहिए, खुश रहिए इतना देके खुश रहिए, कुछ नहीं दे रहे हैं आप. तो हुजूर ये डिटर्मिनेशन उसमें ठीक से नहीं हुआ मेरा एक ग्रीवांस से. लिखिए हर्ड 1972 में हम तो आई विल डील विथ योर वोटर लिस्ट भी दिया है 72 का, जिसमें वाइफ मेरी विद्यावती देवी है और मेरे फादर ने उसको डीड एक्सिक्यूट किया 74 में. उसमें लिखा है कि ये हम अपनी डॉटर इन लॉ को दे रहे हैं 19 कट्ठास. दैट इज विद्यावती देवी. तो ही में हैव सम कांटेक्ट. आपका पेंशन कितना है अभी? 12-15 हजार होगा. और शुक्र मनाइए कि अभी अनाउंसमेंट के लिए नहीं फाइल हुआ है. वो भी आजकल क्या है ना, ये सब डिस्कशंस भी कहीं कोई सुन ले तो उस पर भी फाइल हो जाएगा. लिखिए हर्ड मिस्टर श्रवण कुमार सीनियर काउंसिल फॉर दी. हुजूर एक चीज खाली देखिए, ये हम दिखा रहे हैं, ये कुछ दिन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में हो. एनेक्चर 1 में इन्हें महिला हेल्पलाइन में दिया है पिटिशन कि 10 वर्षों से वो मेरे साथ नहीं रखे. उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये इसे आपका रिलेशनशिप सार हो गया, आपका उसके साथ रिलेशनशिप खराब हो गया, साथ नहीं रह रही, बट द स्टेटस रिमेन्स दैट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. वो तो मान लीजिए कि अगर वेटेड नहीं है तो इलिजिबल चिल्ड्रन का भी वेटेड नहीं है. अगर आपको इतना अगर प्रूव करना है तो गो इन एन इंडिपेंडेंट सूट. प्राइमा फेसाई there are sufficient materials and the learned principal judge has not committed any error in relying upon that. There are sufficient materials to take a view that yes, she is your wife. If you are denying, then go in a properly constituted suit. I've said 1988 से हम दूसरे के साथ रह रहे हैं. 1988 से आप अगर दूसरे के साथ रह रहे हैं तो क्या होगा? What will be the status of that? दूसरे का क्या status होगा? इनका legally wedded He would not be more than a concubine. Her status would not be more than that of a concubine. No, even the opposite party number 2, the status can be that lordships. But her children could be entitled lordship. I don't. Children are different. There is no concept of illegitimacy of children. They may be entitled, but we have to protect the children. And the law protects them. अब ये 25 साल वो सब 30-35 साल का बच्चा सब है. आप और she is not living with the petitioner lordship. मत रहे तो आप कैसे रहेंगे? आप दूसरी शादी कर लीजिए, आप उसके ऊपर केस कर दिया और आपके साथ कैसे रहेंगे बताइए? वो तो एक का मर्डर भी कर चुके हैं. ऑपोजिट पार्टी 2 मेरे साथ एक कलीग थी, उसको मर्डर कर दिया उन्होंने. कन्विक्ट हुआ कि नहीं वो हमको नहीं पता है, लेकिन उसमें सेशन ट्रायल में 6-7 महीना जेल भी दे देंगे. तो ट्रायल में जेल तो आप जानते हैं अंडर ट्रायल्स कितने हैं. अंडर देखा जाए
आपके लायक केस नहीं है सर, फिर बोलेंगे तो ये कैमरे हमारे पर बहुत हम रोक रहे थे अपने आप को। हमको ये बहुत दिन से है कि हमारे हम बहुत अपने को रोक रहे थे कि समझ कहीं रहे ऐसा हैं। नहीं कि फिर जो है हम समझ रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों से हम हमारे समझ गए कि आपकी कुछ लाचारी होगी, इसलिए आप अपीयर कर रहे हैं। हाँ, बहुत दिन से। नहीं तो आप नॉर्मली इस तरह के केसेस हाँ। पे आप क्यों आते ना? लिखा दें ऑर्डर, लिखा दें कि मैं मतलब और कुछ बोलना है आपको? नहीं, हम तो लिखिए लिखिए। हर्ड मिस्टर श्रवण कुमार, लर्नेड सीनियर काउंसिल, assisted by Miss Anjali, learned advocate for the petitioner, and Mr. Faimuddin, learned APP for the state. Petitioner in this case is aggrieved by and dissatisfied with the order dated 27/2017 passed by learned Principal Judge Family Court West Champaran Betia in maintenance case number 120-M/08. Full stop. By the impugned order, the learned Principal Judge has been pleased to allow a sum of rupees 3,000 per month as current maintenance to the applicant wife and rupees 2,000 as arrear of maintenance, which are to be deducted from the pension of the opposite party. Full stop. That senior counsel for the petitioner submits that the amount is being deducted from the account of the petition, pension account of the petitioner, and the same is being remitted to the applicant wife regularly. Next, the only ground raised before this court is that the learned Principal Judge Family Court has not considered the submission of the petitioner that the applicant wife was not a legally wedded wife of this petitioner. so this part number 2 कर दी. Land Council submits that the applicant wife is OP number 2 in this revision application. Full stop. Next, on the other hand, Land Council for the state has drawn the attention of this court towards the findings of the learned Principal Judge Family Court, wherein several materials have been noticed by the learned Principal Judge Family Court to come to a conclusion that this petitioner had married the OP number 2, and there are sufficient materials to show that the applicant wife is the legally married wife of the petitioner. Full stop. No other ground has been pleaded before this court. Next, having regard to the submissions noted herein above, this court finds that in the impugned order, the learned Principal Judge Family Court has recorded the findings with regard to the marriage between the petitioner and the applicant wife within bracket OP number 2 in the following words. Quote कर दीजिए यहाँ से पेज 3 से आप double inverted comma dot dot after analyzing the evidences and documents available on the record so and so वहाँ से लेकर के and she is entitled for maintenance amount यहाँ तक quote कर दीजिए इसको. Next, in the opinion of this court, there are sufficient materials on the record and these materials have not been controverted by the opposite party dash petitioner. Hence, this court is of the considered opinion that the learned Principal Judge Family Court has not committed any error in allowing the maintenance to the applicant wife. This revision, it is dismissed.